हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। थोड़ा लेट हो गया। वैसे मैं जल्दी आने वाला था, बट एक वीडियो एडिट कर रहा था जिसमें टाइम लग गया थोड़ा। तो कोई ना, अभी करते हैं ट्रेनिंग गाइड। हेलो, एक मिनट, इन लोगों को पहले मार। हेलो, इतना लैग का हो रहा है अभी? क्या ये अपडेट में ज़्यादा कुछ डाल दिए क्या ये लोग? हम्म, अभी एक मिनट। ये नया ऐड हुआ है क्या, ट्रैवल गाइड नोएल? येलान वेपन, अच्छा लेवल 80 है ना? ये सही है यार। करंट मैक्सिमम वर्ल्ड लेवल 8। वाह यार, नए प्लेयर्स के लिए तो बहुत सही है यार, ट्रैवल ट्रेनिंग गाइड जो भी है। वैसे पहले मैं प्रीमोस कलेक्ट कर लूँ, 600 फ्री मिल रहा है। ये सही सिस्टम लग रहा है मुझे, बट सारे कैरेक्टर्स को बताएगा क्या? एक मिनट, नोएल का ज़रा देखूँ मैं क्या बता रहे हैं लोग। पहले तो कैरेक्टर लेवल करना पड़ेगा, उसके लिए ले लाइन बता रहे हैं। वेपन हाई यूजेस रेट मीडियम। ओके, आर्टिफैक्ट में क्या बता रहे हैं? हस क्यूज बोल रहे हैं, अपन ग्लेडिएटर कर रहे हैं। ओके, तो पहले अल्ट फिर नॉर्मल अटैक देन अपन ये। ठीक है, अच्छा है नए प्लेयर्स के लिए एक्चुअली। नया वेपन भी देखो, बैनर भी आ गया नया वाला। यूला डेलोक तो चाहिए नहीं किसी को, जीन भी नहीं चाहिए। स्काईवर्ड हार्प का क्रिट रेट है ना, इंक्रीज क्रिट डैमेज बाय 20%, हेट है 60%। और हंटर्स पाथ का भी क्रिट रेट ही है जहाँ तक है। काइनारी के लिए अच्छा है, बट इन सब कैरेक्टर्स में तो एल्विडो ही मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। जहाँ तक है मैं तो इस पे विश करूँगा भी नहीं, बट सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे किसी ने बताया था इसके वेपन में डिफेंस है। स्वॉर्ड नॉर्मल अटैक इंक्रीज्ड बाय 16% एंड एलिमेंटल डैमेज 24% आफ्टर नियर जीरो डैमेज। अच्छा, डिफेंस इंक्रीज है। ओके, तो दोनों में से अच्छा कौन रहेगा? 19% इसका भी है, इसका भी है, दोनों 88 तक जाएंगे जहाँ तक है। च्योरी का वो झंडू बॉम्ब स्वॉर्ड अच्छा नहीं है क्या? वो ग्रेट डैमेज मेरे ख्याल से 88 जाएगा इसका भी। एक मिनट, पहले मैं च्योरी टेस्ट करूँ कैसी है। हैंग आउट भी आया ना। ग्रेट नहीं डैमेज, फिर भी 88 जाएगा तो ग्रेट डैमेज भी सही है ना। Give up. Adventure time. Let's light it up. Everybody stand back. Delicate as silk. ओके,
इसका क्या जियो डैमेज इन्फ्यूज करती है क्या? बीच बीच में जियो डैमेज पड़ तो रहा है, बट उसका वो डॉल कर रही है 30K 16। खुद तो नॉर्मल अटैक में फिजिकल ही दे रही है। Your life is mine. You win. Teamwork is dreamwork. I am the cutting edge of fashion. It's nothing. इसका कुछ समझ आया नहीं वैसे। हैंगआउट्स में स्किप बटन डाल दिया जो डायलॉग से एक बार सुन। अरे बढ़िया, दोबारा नहीं सुनना पड़ेगा। Give up. You're toast. Everybody stand back. Delicate as silk. 39 40K तो जा तो रही है। Submit. I am the cutting edge of fashion. इससे ज़्यादा निंगवांग क्यों मार रही है? 71। मुझे कुछ खास क्यों नहीं लग रही है, पता नहीं। वैसे इसके टैलेंट्स देख सकते हैं क्या अभी? हाँ, increasing upward attack cooldown, opponent attack defense holding। तो ये डीपीएस ही है ना एक टाइप से, बट डीपीएस जैसा डैमेज पड़ नहीं रहा इसका। खैर रहने दो। एक बार उतनी भी अच्छी है नहीं। अभी इट्टो ट्राई करते हैं, इट्टो का पता चलेगा। Give up. Fall in. It's nothing. Everyone on me. Teamwork is dreamwork. It's showtime. Bam. खैर येलो डैमेज दिख तो रहा है। Attaboy. Submit. इसीलिए इस बैनर को सब लोग स्किप कर रहे हैं भाई। Everybody stand back. दोनों कैरेक्टर्स कुछ खास नहीं है। लाइक ये इट्टो तो फिर भी मुझे कैरेक्टर वाइज अच्छा लगता है, डैमेज वाइज तो खैर रहने दो। बिल्ड करोगे तो हाइपर ब्लूम इससे बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। इट्टो का चार्ज अटैक, अच्छा मैं ट्राई करता। Give up. Fall in. Let's light it up. Yeah. पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ इट्टो का वेपन पुल कर लूँ नोएल के लिए। Everyone on me. Advance. As a dutiful maid would. Leave it all to me. Submit. Don't waste my time.
क्योंकि दोनों वेपन मुझे ठीक ही लग रहे हैं। हाँ देखता हूँ मैं उसका। Observe. Steady as stone. Time to clean up. Rally! Strike is one. And leave it all to me. As a good knight should. नोएल का गंदा बिल्ड दिए होंगे ना, पता था क्रिट रेट है ही नहीं। वैसे कौन सा सेट लगा है? Break a leg. Observe. Everyone on me! I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. By royal decree. As you wish, main Fräulein. डोरी पता नहीं क्यों C6 हो रखी है मेरी। सबसे गंदी कैरेक्टर मुझे लगती है। C6 होने के बाद भी इसका यूज नहीं है भाई। You're in for a little shock. Magic lamp. Come a little closer. Hi. Practice on for time. Try not to enjoy this too much. You're in for a... Just like we rehearsed. Here's the good. खत्म। एक बार इट्टो का देखता हूँ चार्ज अटैक। Fall in! Advance! Attaboy! Everybody stand back. Rally! It's showtime! हाँ एक्चुअली चार्ज अटैक बेटर है। एक मिनट। Your life is mine. Going in. Fall in! Who wants some of this? Submit. Everyone on me! Everybody stand back. Oh, coming through! पता नहीं क्यों मैं इम्प्रेस नहीं हो रहा इससे। नोएल मेरी ज्यादा डैमेज करती है भाई। Once, there was a glorious kingdom established. बैटल पास तो चाहिए नहीं अपने को। डायरेक्ट वो रखा है। यार देख लेना पोटेंशियल बाद में। हाँ ये भी है अभी तो। आया ही है। स्पाइरल वगैरह रीसेट नहीं हुआ है ना? 2 days 9 hours अभी टाइम है। मुझे इस बार तो बस वेट्स कर फार्म करने हैं ना। नॉल को थोड़ा लेवल अप करना है। पर मैं वेपन ही पुल कर लेता हूँ। मैं सोच रहा था इट्टो पुल करूँगा, बट फिर दिक्कत है उसको भी बनाना पड़ेगा।
अभी किसी ने सब्सक्राइब किया क्या? 88.2 CD, हाँ। क्रिट डैमेज, इसीलिए तो क्रिट डैमेज वाले वेपन्स अच्छे लगते हैं मुझे, वैसे क्रिट रेट वाले भी। अभी तक है नहीं ना मेरे पास एक भी, इसीलिए। चियोरी का वेपन कर लो, अयाका को दे देना। अयाका मैं यूज़ भी नहीं करता, थोड़ा बहुत करता हूँ। मैंने पुल किया था उसको भी इसी के लिए, लाइक अच्छी होगी, बट है अच्छी, बट उतनी भी नहीं। मतलब उसका प्ले स्टाइल मुझे ठीक नहीं लगा उतना तो। इसका मैं नोएल को दूंगा अगर मिल गया तो, बट मिलेगा ही नहीं अभी तो जहाँ तक है। नेक्स्ट बैनर में भी मुझे वेपन ही पुल करना है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स हैं ही मेरे पास। अरे इसको मानना है क्या? Quietly now. Things are about to get dicey. Time to clean up. Leave it all to me. अकेली नोएल की तो बहुत ज़्यादा डैमेज दिखेगी यहाँ। Gotcha. Take it easy. Quietly now. Game's up. Fun's over. Steady as stone. Busted. Here comes the catch. As a dutiful maid would. इसको किसके लिए मारने आए थे? मेरा नहीं वर्ल्ड, इसका है, दिव्या को। मेरे वर्ल्ड में इतनी आसानी से मरता भी नहीं वो, मतलब जैसे कैरेक्टर्स लेके आया था मैं। अबे क्या कूल लगता है भाई ये गामिंग। मैं भी सोच रहा हूँ बनाऊँ। हाँ मैंने डैमेज देखा था भाई गामिंग का, 2-2 लाख इजीली मार रहा है बिना किसी फूड बफ के। बनाऊंगा किसी दिन। या फिर रुको, अरे ये वाला डोमेन में इलेक्ट्रो ही आते हैं। गान्यू पता नहीं क्या, गान्यू ही रख लेता हूँ।
ice and frost. The more, the merrier. खैर इसके लिए तो 1 मिनट. The tides beckon. Blink. The sun's Settle down. let me amuse myself a little. The more, the merrier. Silence. Are you helping someone? Yep. क्या करना है वैसे इसको? और अच्छा, इस वाले बॉस को. लेकिन इस बॉस का मटेरियल किसको चाहिए रहता है? गामिंग को? Gotcha. Let the mighty be humble. Settle down. I'll do it, Montai. Busted. Silence. Disappear. The tides beckon. अच्छा, गामिंग को चाहिए रहता है. गामिंग ल्यूए का फाउंटेन, ये भी ठीक है. मेरे पास गामिंग C0 होगा ना, या है ही नहीं? गामिंग अच्छा, C1. What is your build? 1 मिनट देखा. I'll show you. 1 minute. He's on hunter set and prototype ember. And this is ratio 36:194. Talents 10:5:7. यहाँ किसको मारना है? अच्छा, नीचे फाइट हो रही है क्या? No conquering. Worthless. Settle down.
ये कुछ ज़्यादा लैग वैग टाइप नहीं दिख रहा मुझे, पता नहीं। Okay, so on talent I should focus on his normal attacks. Yep, only normal attacks. Like I have to level up Will sooner die this again too. than lay a hand on me. Oh, nice. अभी कैरेक्टर मटेरियल्स दिखाने लगा क्या? ओके, ये सही है। ओके, नेवर माइंड। I'm bothered with how that is now low HP. Lol. Yep. I should take a healer like new plate or I don't know, maybe cloud retainer. Why लैग क्यों हो रहा है बे इतना? Whom you going to pull in this banner? Smiley. I'm skip this first phase and pull on Kazua's banner. And obviously I'll go with for Kazua. हाँ, मैं तो खैर मैं सोच रहा था इटो निकालने की, बट अभी लग नहीं रहा। I'm going for newbie weapon, skipping Kazuo this time again. Newbie plus weapon. Okay. I'm going for newbie weapon, I guess. श्रेयतम और श्रेय भाई क्या हाल चाल? दिव्या पता नहीं है, शायद से सब्सक्राइबर ही है। एक दिन हेल्प के लिए बोली थी। Are you here Let the mighty be humbled. for the merrier? Shine low. Bow your head. Make way for the adaptive. Be sanctified. Look at me. Wait, newbie and weapon on same time? Is this Ray? Yes. I guess Masaya is going for both newbie and his weapon.
I'll try to get his weapon. Let's see. Same here. Yeah! Skyward! Scatter! Stray clouds converge! Silence! Disappear! Settle down! Worthless! Let the mighty be humbled! Kenneth Gaming, this ryzen is Masiya. Yeah, please Masiya. Bhai. His second ID. Although I am on 74 PT and my hands. वाह मत करो पुल मसीह भाई, अगर इट्टो वगैरह पे कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे लगा था वो हिट होगा, बट उससे अच्छा तो नोएल कर लेगी अगर पूरा बिल्ड करूं तो। मैं ट्राई कर रहा हूँ इट्टो का वेपन निकालने का, अगर मिल गया तो। Scatter! हाँ, इतना लैग क्यों हो रहा है? सही तो है, पता नहीं। नेटलन से मुझे और डर लग रहा है। फिर मुझे लो में खेलना पड़ेगा, ये ज़्यादा ही लैग वैग हो रहा है। Silence! And why are we here? एसएसडी में डाल दे जेंसिन को। हाँ वही करूँगा मैं, आज नहीं कल करता हूँ, आज तो नहीं कर पाऊँगा। बट इसको क्यों मार रहे हैं हम लोग? The more data samples, the better. The tides beckon. Huh! Settle down. Make way for the Adeptus! Yeah!
स्टोरी क्वेस्ट आया ना, और ये कर सकते हैं आज अपन। हैंगआउट्स तो अभी नहीं कर रहा। Whether it takes me uphill, downhill, Sam or out to the sticks, equipment, I get the goods from A to B. I'll even take him across the sea if needed. So don't. man, we pity now you more than you will get it. अच्छा राइडन मैं हूँ, लॉल। No, he is in 50-50, I guess. He got Naida C1. Bow your head. Silence. ये टीपी अनलॉक क्यों नहीं है? Skyward! Skyward! Scatter! You need to pray all gods to win 50-50. Skyward! Scatter! Skyward! Scatter! Hmm, 50-50 जीतना। Skyward! Scatter! Skyward! Scatter! Skyward! Settle down. The tides beckon. Bow your head. Be sanctified.
फायर है नहीं मेरे पास। हाँ गामिंग कर सकता है। नहीं होगा। Settle down. Every day a single wish with the help of Velkin. You have Velkin, so nothing to worry. 90 plus 60 plus 10 Genesis crystal. 245 days. Play with it too. I don't have it too. एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ पुल करूँ या ना करूँ, बट मैं करूँगा नहीं क्योंकि नोएल ऑलरेडी है मेरे पास। And my Vulcan helps a lot. See, she returned and you don't have. है इट्टो लड़की नहीं है, The tides beckon. इट्टो लड़का है। Settle down. What the fuck? ये क्या डैमेज है बे? Bow your head. अच्छा डन। फिर इसको मैंने फालतू मार दिया। ही मान लो, ठीक ठाक लगा लो। मसीहा उधर तो मैसेज देखेगा नहीं, इसलिए मसीहा हैप्पी बर्थडे इधर ही। आज मसीहा होएगा बर्थडे है, मुझे ही नहीं पता था। लॉल, ऐसे अभी उठा हूँ, कहाँ से पता होगा। मतलब थोड़ी देर पहले उठा था मैं, बट वीडियो एडिटिंग कर रहा था। ऐसे कल शायद से वो वीडियो एडिट हो जाए, तो कल आ जाएगी वो वीडियो। I must leave no stone unturned. कितना झूठ बोल रहे सुधांशु गंदा, तुरंत रिप्लाई दिया था। मैं भी अभी उठा, फिर देखा 13 मार्च। Quietly now. मुझे सही में याद नहीं रहता भाई, बर्थडे बर्थडे। Busted. Take it easy. Quietly now. बात करने वाला क्यों दे रहे, मारने पीटने वाला देते। अब ये पता नहीं इसका।
शूटर बेटे स्पेलिंग मिस्टेक है भाई। अब तो ब्रेकअप हो जाएगा, बर्थडे याद नहीं रहा लॉल। याद नहीं रहता। अब तो पता तो है, विश कर दो। हाँ हाँ बोला तो हैप्पी बर्थडे। अच्छा नहीं बोला था क्या? हैप्पी बर्थडे मस्सी भाई, हैप्पी बर्थडे। I'll catch up. थैंक यू थैंक यू। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ भाई पता चलता है, अच्छा बर्थडे है तेरा, चल फिर पार्टी करते हैं। चलो कमीशंस तो आसपास ही मिले। शूटर को बधाई वगैरह नहीं जब तक किसी लड़की की बर्थडे वगैरह नहीं हो। अच्छा लड़की का होगा तो देखो स्टेटस पे लगाएगा। हैं क्या मतलब? मैं स्टेटस ही नहीं देखता इंस्टा की, कभी कभी खोलता हूँ। मैं रील्स के लिए देखता हूँ बस, मीम्स। हाँ हाइलाइट्स नहीं आई रे। कल वैलो में कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था तो आज एडिट किया, आधा हुआ है। लाइक अभी बस कट वाला वर्जन हुआ है, उसमें मीम्स डालना बाकी है। Make way for the teamwork is dreamwork. As a good knight should. Steady as stone. 41 के पर है क्या अभी? Someone needs to quietly now. Let's light it up. Here comes the catch. Going in. अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नोएल से मेरा 100K करने का सपना पूरा होगा। इधर से ही दौड़ते हुए जाते हैं। Skyward. Scatter. वैसे पहाड़ तो अभी चढ़ना था, पहले स्किल क्यों यूज कर लिया। Scatter. Skyward. कैमरा एंगल ऊपर कर दो सुधांशु, आ जाएंगे। अरे नहीं 100K सब्स नहीं, 100K डैमेज भाई, सब सभी का। Scatter. Scatter. Gotcha. Skyward. मैं हाइलाइट्स कह रहा था कैमरा एंगल के लिए। अच्छा लॉल नहीं, वो गेम एक खेला था हमने, लीथल कंपनी, शायद आज भी खेले, वो उसका हाइलाइट्स की बात चल रही थी। मस्त गेम है, बस या भाई को तो कितनी बार मॉन्स्टर उठा के ले गया था, मजा आ गया। ऐसे इतनी बड़ी वीडियो है ना उससे भाई, कितना भी कट करें तो पूरा नहीं डाल पाएंगे अपन। Add astro. मैं तो मस्त एक 15 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा।
Add Astra. अभी स्टोरी क्वेस्ट करें या विश करें? कैथरीन के पास तो नहीं कर रहा। ये इतने गंदे ग्राफिक्स, मेरे पीसी क्रैश हो जाएगा गंदे ग्राफिक्स देख के लॉल। एलवी तो इसे तो चाहिए नहीं, इस पे बेस करता हूँ, पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि वैसे भी इस पे कुछ नहीं मिलता। कब की पेटी मेरी बिल्डेड है इसकी देखनी पड़ेगी कितनी है, या फिर हट भी गई। नहीं है। 6 7 8 35 के ऊपर है पेटी। और इसमें 4 स्टार कौन कौन से हैं, डिटेल्स किधर से दिखेंगे? इंटर, पता नहीं, जो भी है मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी वेपन मिले मुझे ठीक ही है। और मुझे 4 स्टार तक नहीं देंगे ये लोग। मेल क्लेम किए, हाँ फीमेल तो मिल रही, इसलिए मेल क्लेम कर रहा। हाँ कर लिया 600 प्रीमो, इसीलिए तो 800 हो रखा मुझसे। साले एक 4 स्टार तक नहीं दिए इन लोगों ने। यार 100 प्रीसेट में भी अभी टाइम है। नाइस, 18 दिन है अभी, तो इधर ही हुआ था रीसेट। और अभी ओके, मैं नोएल को लेवल अप कर लेता हूँ ना। वेट्स फार्म किए तो थे मैंने, नहीं किए थे। वेट फार्म करने ही जा रहा था जहाँ तक मुझे याद है। चलो अभी कर लेते हैं। Scatter! Seize the skies! Game's up. Fun's over. Teamwork is dreamwork! As a dutiful maid would, I must leave no stone unturned. अबे ये लोग नहीं मरे क्या? Busted. Skyward! Gotcha. ये छोटे छोटे इस बैनर पे तो पुल करोगे नहीं मसिया भाई, या फिर कर रहे हो? वेपन वैसे ठीक है, नहीं आपके पास तो है पुरीना का वेपन। 88% जो भी देता है ना, क्रिट डैमेज देख के मस्त लगता है वेपन। Scatter! Skyward! I'm going in! Here comes the catch. Make way for the... As a good knight should. करा था 7 8 पुल्स लॉल।
मिली I'll कोई catch up. या मिला कोई? अच्छा 74 की पीटी हो गई ना यानी Busted. ज़्यादा हुई या फिर कितने? मैं कहा या आर्या पर अब नहीं करूँगा, न्यू भी ही निकालूंगा। ओके ये पिछले 8 दिन से सुन रहा हूँ मैं, जहाँ तक कि मुझे याद है। Let's light it up. अब नहीं करूँगा फुल। Seize the skies. Teamwork is dreamwork. Game's up. Fun's over. Time to clean up. Leave it all to me. The hunter becomes the I'll catch up. Someone needs assistance. I'll catch up. हार गया 50-50 तो आर्लन कीनो ओवरलोड डीपीएस है वो, तो राइडन के साथ रहेगी। बढ़िया यार, आर्लन कीनो तो मुझे भी चाहिए अगर मिली तो। वैसे मिलेगी नहीं क्योंकि मैं वेस्ट कर देता हूँ, तो पता नहीं उसके लिए पुल्स बचेंगे या नहीं। Things are about to get dicey. Stray cloud converge. I'm going in. As a dutiful maid would. सेवेंटी 78 ही हो पाया। वार्ड में भी ज़्यादा कुछ बचा तो होगा नहीं, बट जो बचा खरीद के आ जाता हूँ। हालांकि नो वैसे अच्छी तो होने वाली है। फटुई मेंबर है। This realm is. अबे 600 दवाई। अच्छा कल रात को ही तो लेके गया था मैं, भूल गया। फिर अभी कहाँ से 2-4 ही होंगे, कहाँ जाएंगे। If you ever. मैं तो चला स्टोरी क्वेस्ट करने। क्या आपने कर लिया क्या चियोरी का स्टोरी क्वेस्ट? पता नहीं वो मुझे इनाजुमा की वाइब देती है पूरी। उसको फाउंटेन का कैरेक्टर क्यों बनाया अब ये नहीं पता। स्टोरी क्वेस्ट अच्छा भी स्टार्ट नहीं किया। देखते हैं, क्या पता ओरिजिन उसका इनाजुमा या ल्यूए ही मिले। It seems like there's another event going on at the Court of Fontaine. Look at that. Roadside sign. बहुत दिन बाद पायमन कुछ बोली है। Is this really okay? I told you I could do it using the leftover funds from the original deposit. Don't tell me you're afraid that I cheaped out on the dress. No, not at all. I have only the fullest faith in your work, Miss Chiori. I'm just in shock, that's all. It's always been my dream to wear a Chioria boutique dress for my wedding. I really thought the chance had passed me by. Wait, isn't that Chiori? She's actually at her shop today?
got a point there. फैशन Once वीक she's done with her customer, we can go and ask her. चेक डिस्कॉर्ड अभी पालंकिनो गॉट गेम टेंशन ओ माय गॉड हैं ट्विटर पे लीक भी हो गया क्या हेलो अबे नहीं किचिंग लग रही है भाई ये वो किचिंग का अल्ट इसका चार्ज अटैक है क्या भाई क्या लग रही है नाइस I'm a woman of now. I'll try my best. Once he sees me in this, his jaw is gonna drop किचिंग लग रही है straight to वो the मुझे floor. मतलब किचिंग का जो अल्ट है ना वैसा Really so shocking? It is mine after all. अरे भाई एक Anything you're मिनट looking for today? A custom design or perhaps some ready-to-wear outfits for kids? Hey, Paimon's not a kid. Oh. That. Are there any fun? Ugh, Fashion week. लोगों को is प्रीमियम दे दो फिर भी एड्स देखने का शौक होता Will you है be showing us? Of course. All does come to think of it. Aren't you pretty much an established name now? People will still buy your clothes even if you don't participate this year, right? Yeah, that's not quite how it works. While many people buy clothes for fit and stuff, why would anyone patronize a label that in the end, fashion is just a representation of the spirit of the times. Huh. All that वैसे Absolutely. मुझे ये Ooh, are you कपड़े using के it? बिजनेस में कोई Well, इंटरेस्ट है नहीं Paimon gets it. Ugh. इसका कुछ अच्छा स्टोरी आएगा तो वो मैं सुनूंगा वरना स्किप कर रहा हूँ Excuse me. Coming through. किरा रहा Coming through. Chiori, your shipment's here. I know it's quite late, so I'm really, really sorry. Deep अरे नहीं breaths, देख Kirara, उसे रहा हूँ then चैट start again. इसे खुलिए पीसी में Oh, so Kirara's पॉप the आउट boy you चैट were अच्छा talking about. Oh, hey, Traveler and Paimon. Fancy seeing you here in Fontaine. It's been a while. Wait a second. This is the second time that you've seen me flub a delivery job now, isn't it? Oh, you somehow always happen to catch me off my game, huh? So, what was the holdup? Sailing delays, bad weather? Huh? No, nothing like that. I just ran into a bit of trouble, that's all. झूठ बोल ली Bandits, then? Or treasure hoarders? Well, I didn't run it. Keeping you honest as always, I see. All right. I was stopped by a group of bandits as soon as I entered Fontaine. They were a little different from the ones I usually run into. I could hear them mumbling about Komunia Express. It was obvious they were looking for someone with two tails. So it was a targeted hit? I got the sense that they were actually targeting Chiori's goods. My fabric shipment? Yeah, they said that I could go as long as I left the goods with them. Otherwise, they'd stuff me into my delivery box and toss me into the sea to drown. अबे इतना वो काम होके कैसे बोल रही है ये I'm good. I'm still a yokai after all. I turned them over to the guards. It just took me a while to round them all up. Well, it's not completely out of the ordinary for one of your deliveries to get intercepted. But it still doesn't make sense how you knew it was my goods they were after. Is there something else that you're keeping from me? Well... Perhaps I need to reconsider how many stars to give you in my review. You always know how to get me, Chiori. Alright, I'll talk. So, I kinda wanted to know why anyone would order a hit on me, so I spent a bit of time investigating. One of the bandits had a loose tongue, which saved me some time. He said that a certain person had commissioned them to intercept Chiori Boutique's delivery. And who might this person be? Chiori, why don't we just let this one go? I mean, I didn't really get injured, and you've still got Fashion Week to worry about. I appreciate your kindness, Kirara. But if I don't teach this person a lesson, I doubt they'll stop here. Anyone that dares to mess with one of my friends deserves a stern talking to and then some. Alright. The guy said that the commissioner was someone by the name of Uter. Uter. Now that name rings a bell.
wouldn't you say, Kira? Well, that's exactly why I didn't want to bring it up to you. So you both know this Uter guy? Through Chiori's complaints about him, sure. He's a fellow fashion designer who's made it his goal in life to make hers as miserable. So he's like a business rival. A rival is what you call someone who fights you fair and square. Uter, however, just has it out for me as a designer. He's publicly disparaged my design choices, my use of materials. I've already warned him before to compete with me fair and square, but I guess he prefers playing dirty. Well, I'm more than happy to oblige. अब उतर को अपने को पीटना है क्या? Chiori, where are you going? To teach someone a lesson. रुको मैं भी आ रहा हूँ. Chiori! And she's gone. Oh no. You seem concerned. Should we be worried about Chiori? Well, she's always been the type of person to face things head on. But with her fiery temper, I'm just worried whatever she's about to do will feel negative publicity about her right before the start of Fashion Week. Traveler, Paimon, could you go after her and check out the situation for me? Yeah, we'll take good... to be honest, I'm more worried about that Uter guy's safety. उतर गए जो भी है मार खाएगा वो. Zebras. Any chance you're on the clock, officer? Nothing good ever comes out of you addressing me like that. Oh? And I see the Traveler and Paimon are here too. Chevraz, we meet again. Well, things have been fine on my end. I suppose the trade-off... Well, you were one of the leading roles after all. So, did something happen? Indeed it did. I'll need you to come with me. I only ever hear that phrase from you. Usually I'm the one asking people to do that. Well, are you coming? Not before I know what you're planning. Have I ever made a bad call? The better question is, have you ever made one that didn't violate proper procedure? Okay. A man hired a group of bandits to mug my friend. I'm about to go teach him a lesson. Are you sure this is something you should be telling the captain of the special patrol? It's getting hard to tell whether you're here to report a case or turn yourself in for one. Neither. I'm requesting personal supervision from said captain, so I don't do anything too out of line. Are you planning to? अबे कैमरा एंगल क्या मस्त डाले हैं वे ये लोग. नए वाले इवेंट में सभी में ऐसा चल रहा है. Follow me. खतरनाक कैमरा एंगल यूज कर रहे हैं लोग आजकल. पहले वाले इवेंट्स में ऐसा नहीं है. अभी मस्त लग रहा है. Just promise you'll start trying to keep yourself out of trouble. Well, when trouble stops coming my way, I'll be... ये फाउंटेन में तो खूब यूज किया है इन लोगों ने कैमरा एंगल्स का. You know, Chevraz, Paimon gets the sense that you two are actually pretty close. It's just as Chiori said. We got to know each other pretty well in our lines of work. Does Chiori often need your help? I'd say it's mutual. The Special Patrol needs her help quite often as well. We've got tough problems of our own. The uniform, the musket, they're intimidating. Most people put them in a clothing boutique. Oh, is it because they're trying to show off or something? Yep. People are vain creatures. They can't help but want to talk. As a result, Chiori often... You scratch my back and I'll scratch yours. Huh, Paimon gets it now. Exactly. I'm also here to ensure Chiori's safety. Those who make trouble for her also tend to be rich and powerful. And in some very rare cases, I'm forced to protect other people from Chiori herself. So, who got on her case this time? It's been a while since I last saw her that angry. Oh, so this is what happened. Huh? Uter, you say? You've heard of him? Yep. He's made trouble for Chiori several times already. He's fine, so he's back at it, huh? His funeral, I guess. Whoa, what's this about a funeral all of a sudden? I just meant that Uter's done for. Sure, but why? Because this is probably going to turn into one of those very rare cases I just... मार खाया.
What are you doing? Stay away from me! Has anyone ever taught you the definition of stupidity? Huh? Stupidity is doing the same meaningless thing over and over again. It appears you've forgotten what I told you before. So, allow me to refresh your memory. Lay off the dirty tricks. Oh, and if you dare lay your hands on my friend again, you can expect a far less pleasant landing next time. Chiori? अबे ये बंदा भाई Officer, an assault's in progress! Please, officer, you've got to do something! Of course. I'll do my utmost to investigate the situation. Unfortunately, I was chatting with this traveler and seemed to have missed what happened. Not to worry, though. If you'd allow me to search the scene, I'm sure I'll be able to collect some useful evidence. You don't mind, do you? There's nothing in there that would implicate you in any illegal activity, I would hope. Forget it. It wasn't that big of a deal. Ms. Chiori, I must also ask you to refrain from engaging in such disorderly conduct in the future. Especially गेमर है on ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम Apologies, मेरे officer. को अपने I guess फ्रेंड you could say I'm रिक्वेस्ट just में used ले to लो tossing प्लीज out any trash I come across on the street. जेंसिन में मेरी यूआईडी दिख रही होगी ना Is फ्रेंड there रिक्वेस्ट anything भेज दो else either of you have? That's all from me. We'll see about that. Whoa, that scared the heck out of Paimon! How did he just go... You're too kind. Now's not the time to be accepting compliments. What happened to not doing anything too out of line? Oh, not if I could help it, is what I said. I started with a verbal warning, but he displayed neither shame nor कहाँ है remorse. ये If anything, बॉटम राइट में दिख रहा है 834125 Insults so bad that he deserved to be 234 tossed out like a sack of trash? believe it or not, they were that bad. You could have reported him to the guards. Oh, I will. I don't want anything else to happen during Fontaine Fashion Week. On top of... Oh, that reminds me. There is another favor I'd like to ask of you today. What a shame. I believe you've already used up your favor quota for the day. Have I? Well, it's a good thing I was planning on taking an advance on tomorrow's quota then. Don't you think you're maxed out on advances already? I always pay you back in information, don't I? It's just like you said. You scratch my back, and I scratch yours. भाई इनका अलग चल रहा है बिजनेस में खैर सबकी स्टोरी वैसे ही होती है नीलू की डांस वाली थी तो उसकी डांस की प्रॉब्लम चल रही थी इसकी कपड़े की बिजनेस वाली है तो उस पे चल रही है We're back. किरारा You were gone for an awfully long time. Oh, please tell me nothing bad happened. There's nothing to worry about. All you need to know is that you'll never have to worry about someone in Fontaine messing with your deliveries again. Sorry, Chiori. I didn't mean to cause you so much trouble. What are you talking about? You didn't do anything wrong. Those greedy bandits are to blame. Along with the next time you need to leave the city, call the Special Security and Surveillance Patrol. They'll escort you half of the way, and the Spina di Rasula can take the second half. With that sort of escort, the next time you make a delivery, those treasure hoarders won't go anywhere near your goods. Unless, of course, it's to offer to carry them for you. Good one, Chiori. I'm being serious. You know me. If I bring something up, you can assume it's already a done deal. You're going back to अंकुरा Esports tomorrow, टाकिस right? कैसे हो भाई बढ़िया भाई Wait, you don't mean... I've already spoken to the captain of the Special Patrol. As discussed, There's really... well, it'll also show those guys what'll happen to those who dare to mess with my friends. Well, with the bad guys out of the way and your goods safely delivered, everything should be good to go for Fontaine Fest. I believe so. I'll try. Paimon's gonna take a... But of course, they supply us that's also why this year's Fashion Week is so important. But isn't your brand already really famous, Chiori? Your clothes are so pretty and so nice to wear. I can't help but brag about them to my customers whenever I get the chance. Even so,
I would imagine there are still people who've never heard of the Chiori brand. Yes? अपडेट अच्छा लगा मुझे तो, मिड लगा ऑनेस्टली। नया बैनर बहुत अंडरवेलमिंग है। हाँ एक्चुअली में मुझे लगा था शायद इट्टो ज़्यादा बेटर है, बट नहीं, कुछ खास नहीं है। All of it? Your business would have to get pretty बैनर भी कुछ खास नहीं है, और देखते हैं इवेंट वगैरह तो अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अभी तो कुछ खास लग नहीं रहा। Alternatively, और स्टोरी भी फुल इसके बिजनेस पे ही है। That's your dream, Chiori. Then we should do our best to make it a reality. Oh, what is it? why don't you come to my shop tomorrow? Oh, so we get to try on some of your clothes? Got it. Seeing them off the rack will also... Sounds easy enough. No need. If you like them, Ooh. then we have a deal. तो इस बैनर पे पुल कर रहे हो क्या किसी पे? या स्किप ही कर रहे हो? बहुत लोग तो स्किप ही कर रहे हैं, 80-90%। 10 to 6 हाँ, 1 मिनट, 6 to 10। मुझे तो नहीं अच्छा लगा ये। देखते हैं, अभी पूरा आया ही नहीं है एक्चुअली, पूरा आने के बाद ही बता सकते हैं इवेंट वगैरह कैसा था। बैनर तो अच्छा नहीं है, ये तो पता ही है सभी को। और नया बैनर सिस्टम भी मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जिसके पास 180 पीसेस हैं उनको ही ठीक है। मतलब सीधा बोलूँ तो F2P के लिए नहीं है। Wait, has Kirara left already? Yep, with the special patrol. Bright and early. Did everything go all right on the road? I believe so. The way they marched, they took care. I even heard that Navia... Sounds like Navia really got into it. My thoughts exactly. You know, now that you mention... I suppose that's why we're such good friends. Navia has a certain resilience about her. It's part of who she is. That same spirit is the true vision of my brand. It's like finding the perfect brand ambassador, huh? Indeed. Customers pay attention. Huh. And fashion is about more than... Well, would you look at the time? Oh yeah. Come on, let's Indeed. Give me a moment while I go retrieve some fabrics and sample outfits. set them up. How exactly? ट्रैवलर का अभी तक Just कपड़ा चेंज हुआ carefully नहीं है, organize the और right होगा भी नहीं clothes जहाँ with an तक eye है। toward their type. Whoa, there sure is a lot that goes... Well then, I'll leave the displays to you. So, we just need to put all the clothes with similar styles together, right? Ugh, you didn't get bought out by my competitors, did you? Ugh, this arrangement, it's... Never mind. Anyway, let's move on to the real task at hand. Over here, stand still. I'll take your measurements first. हमें कपड़ा मिलने वाला है क्या एक्चुअली? Excuse me, Miss Chiori. Oh, good morning, Leanne. How have you been recently? Not too bad. Your gown will be ready next week, so there's no need to worry about missing the ball. Or did you come here today because you'd like to make a new request, perhaps? Oh, no. Nothing like that, Miss Chiori. To be honest, I came here today to cancel my order for that gown. कैंसिल? Cancel? But you can keep the deposit, of course. I know you can't return any materials you've already used. Don't worry about the materials. I'm more concerned about you. Did something happen, Leanne? Have your plans changed? It's all right. I'm not trying to make things difficult for you. I'll take note of the cancellation. Thank you. I'm really sorry. Don't worry about it. Just let me know if there's anything I can do to help. Is it just Paimon, or was she acting a bit strange just now? It's not a big deal. These things happen every once in a while. A family emergency, an important payday falling through, a lover's quarrel, no one to take you to the ball. Judging from the look on her face, something's keeping her from revealing the truth to us. It's best not to pry. Well, guess this means you'll have more time to work on Fashion Week, right? That's true. Come, let's pick up where we left off.
Is Miss Chiori in? ये कौन है अब? I am. How can I help you? I'd like to return this item. Oh. Could I ask why? It's just, not to my liking. You said I could get a refund if I wasn't satisfied, so that's why I'm here. Is there something about it that didn't meet your expectations? Are the sleeves too short? Or is the color too dark? I can always make those adjustments for you. Oh, no need. You don't have to concern yourself with that. I'd just like that refund, please. And I'd be happy to process that for you. If you could just tell me the cause of your dissatisfaction. Chiori here. I'd like to return my outfit. हैं? Another तब one? Is there some sort of new calamity coming that I haven't heard about? Another flood? Or an apocalypse, maybe? What does the prophecy say this time? You'll be spared if you get rid of all your clothes? Surely the entire population of Fontaine didn't convene and pick this one day to come and return my clothes. What is going on? What kind of rags are you trying to sell us, huh? The way I see it, this shop is nothing more than a black market front run by a bunch of dirty criminals. Please calm down, sir. What is he talking about? Haven't you heard? Chiori boutique has been exposed for having close ties with criminals. It's all over the papers. And just who is it that dares to throw that accusation around? अबे ये You tell us. सेवरस तो The नहीं, fabrics क्या you नाम need था here, उसका? they're all sourced from underground factories, aren't they? I've been transparent about my materials from the very beginning. I've already proved there's nothing wrong Charlotte. with them. If a little hearsay and baseless slander are enough to convince you, then by all means, go ahead and hand over your garments right now. Spare yourself from that flood of yours. Or have you not been convinced of that one just yet? You... Elof! Miss Chiori? Go outside and help these customers with their return requests. There's no need to ask them why. We'll refund them at the purchase price. Alright. And once you're done, put up the sign that says we're closed for the day. Got it. अबे ये क्या है? किसने शार्लेट I शार्लेट couldn't ने be तो more नहीं fabricated किया if होगा. it's trunk. The real goal. If you say so, but The best way to respond to... Miss Chiori, bad news! Oh, for the love of... Can a woman not get a moment of peace to do her work? Go on. What's the matter now? It's our accessories supplier. They just sent word that they'll no longer be able to supply us during Fashion Week. What? No accessories? Not even the ones we pre-ordered? Yes, that's what their messenger said. And what about the models we asked them to book for us? I think they'll probably pull out as well. even the suppliers believe those nasty rumors? Is the messenger still here? No, they've already left. So, no accessories means no brooches, no bow ties, things like that? Not just that. It means no gems, ribbons, gold thread, all the elements that lend life and soul to my designs. But if you take those away, does that mean you won't be able to make your designs at all? Alof, you stay and watch the shop. I'll go talk to the supplier myself. Yeah, and we can vouch for you too. We'll make sure your supplier knows there's nothing wrong with your clothes. Thank you. In that case, please come with me. ये रूमर्स फैला कौन रहा है? शार्लेट तो नहीं होगी. इधर से जाने का है रास्ता क्या? ओके, शायद नहीं जाने का. Skyward! Scatter! By the way, we really are just going to talk, right? Of course. Who is it? Venger, it's Chiori. We've worked together all these years. The least you could do is allow me a face-to-face conversation.
Straightforward as always, I see. You know, And when has following convention ever gotten me anywhere? Why hire a messenger when I can just explain things in person? have you read the papers today? I don't like to waste my time on baseless lies and speculation. Maybe that's something you should consider as well. You're right. I only subscribe to the Steambird. And most days, I never even read the others. So, these rumors. The Steambird was the one that published them? No, not at all. They were in some second-rate fashion tabloids. Well then, there you go. Those sort of headlines become old news faster than you can read them. Surely a bit of tabloid drama isn't worth cutting off my supply. You would think that. But this time is different. Someone paid off the tabloids to publish the same article at once. They even went so far as to leave a copy in front of every house. That's how I first learned of the rumors. Every house? That means someone must have been planning this for a very स्टोरी क्वेस्ट में तो किसी को बुला भी नहीं सकता. yesterday. Wait, Here, I've got a copy. See for yourselves. वाह भाई. behind the scenes, the true Chiori boutique takes shape. Not a fashion house, but a house of lies. Relying on its close ties to the ये वही तो नहीं है इसका राइवल जो I था. don't know what happened, and I don't want to comment on things that I didn't see with my own eyes. ऊथर जो भी नाम था उसका. I appreciate you standing up for me, Paimon. But it can't be helped now. That's right. The court of public opinion has already made up its mind. Still, I've got to give your rival high marks for effort. They even dug up the fact that my father once served time in the fortress of Meripede. But that was so long ago. In the world of fashion, your past is like a piece of clothing stained with mud. One, they claim that most... The absurd. Well, maybe your clientele are criminals, but with the way... Venger. but I'm no... I'd be perfect. I... Let me offer you a piece of advice, Chiori. For old time's sake. Let this fashion week go. You're free to wait things out, Venger. I'll make my own choices. Have you ever thought maybe this attitude of mine is precisely what paved the way? Fair enough. Understood. So, what should we do now? Without the accessories, I can no longer use my old designs. How could they do this? They're making things up. The boutique doesn't have anything to do with violent criminals. Can't people tell this is just a bunch of lies? Public opinion has never been about what's true and what's not. It's about echoing the loudest voice in the room. I should have seen it from the beginning. Uter knows me too well. Everything that happened yesterday was just a trap. Well, guess all we can do is just head back for now. अबे सालट आ गई. Traveler, Paimon! Charlotte, what are you doing here? Looking for you, of course. Did you see those fashion tabloids this morning? You mean that sorry excuse for an article? Oh, just thinking about it makes Paimon's blood boil. You too, huh? Whoever wrote that article must have known the Steambird would never print something so defamatory. Unfortunately, not all papers in Fontaine share our same sense of journalistic integrity. Miss Chiori doesn't deserve to suffer all this baseless slander. I was just about to find some people to interview so that I can write an article to refute all those claims. If there's one thing I can't stand, it's people who misrepresent and distort the facts. That's great! With your help, we might be able to get some people back on our side! It's my pleasure. I've met Miss Chiori several times. I know she's not the kind of person that article makes her out to be. She was the one who made the hat and tie for my camera, Monsieur Verite. Speaking of Miss Chiori, do you know where she went? Alof told me you were all together. She was just here. Maybe... If you ask me, I think Chiori Boutique is done for. I mean, what did they expect? Engaging with criminals behind their customers' back. They kept up a solid front, though. I've even bought from them before. Really? How was it?
The owner was plenty fierce, that... हर जगह उसी की बात चल रही है. Oh no, we've lost... Did you hear what all those people were saying? Paimon can't believe they bought all that nonsense! Miss Chiori doesn't often appear in public or give a lot of interviews, so the general public hasn't had a chance to really get to know her. It's also true that her way of dealing with things can be a little extreme sometimes. It's easy to use that to mislead people who don't... Wait a second. You don't think Chiori might have gone looking for him, do you? You know, so she can, finish what she started? That would only make the situation worse for her. I'm sure Miss Chiori knows that too. You've got a point. Let's just return to the boutique and see if she's there. Elaf, we're back! Oh, who's this? Ah, this is Miss Letitia. She's also here to see Miss Chiori. Oh, you were the one who came to collect the wedding dress yesterday, right? Wait, please don't say you're returning that dress too? Oh, no, not at all. I'm just here to thank her. In fact, if there's anything I can do to help her out, I'd be more than willing. Ah, so you've come across that article as well. Yeah, you probably don't know. My fiancé owns a small business. It doesn't bring in a lot of mora, but we get by. After he proposed, he took me to Chiori Boutique, and we put down a custom... He probably noticed how often I talked about Miss Chiori's clothes, and how pretty they were. Being able to wear one of her dresses to my wedding has always been my dream. And then? And then, something happened to the business, and we ran into major mora problems. We were able to scrounge up enough to pay off our debts, but it left us without the funds to pay for the dress. But didn't Chiori say she was able to make the dress from what was left of the original deposit? Yes. When I came to cancel the order, she asked if something happened, and I told her everything. She heard me out, and then told me not to worry. She assured me that the deposit I paid would be enough for the dress, and that she'd be able to finish making it in time as well. She promised that I'd be able to wear a Well, that's a good thing, isn't it? I've always known Miss Chiori to be a woman of her word. It is good. It's just, after I went home yesterday, I couldn't help but take out the dress and try it on. My fiancé happened to walk into the room, and when he saw me, he froze on the spot. What a shame. He's not supposed to see it until the wedding day. Well, see, that wasn't actually the issue. He's seen a lot of wedding dresses in his time doing business. So as soon as he saw it, he knew for sure that it must have cost far more than what we paid. Huh? So wait, that means... Yeah. Miss Chiori covered all the costs and held nothing back. The fabric, accessories, beading, construction. It was all of the highest quality. Miss Letitia, I'd really like to use your story for a piece I'm writing about the boutique. Would you mind going on the record? Huh? Well, if it would help Miss Chiori out, I wouldn't mind at all. I think it'd go a long way. Your real experience is more powerful than all those lies combined. Hey, Olaf! Has Chiori come back here since we... Huh? I thought you... Well, we were... Oh! I remember now. There's this one cliff by the sea. Miss Chiori would always go there whenever she was upset. In that case, why don't we split up? I'll continue interviewing Miss Letitia, and you two can go look for Miss Chiori. All right, sounds good. Let's go. यही क्लिफ है. Skyward! Scatter! There you are, Chiori! How did you know where Elaf told you, didn't she? She did. We were just looking for you at the shop and Letitia was there. She wanted to thank you for the dress. So, you see? You don't have to be sad. We'll figure out how to
I'm not upset. I just wanted to get some fresh air. Want to sit here with me? The view's quite stunning. Don't worry. I'll catch you if you fall. Alright, don't mind if we do. Well, how does it feel? This place is pretty great. Right? It's quiet and open, and far from the... Yeah, it's important to take yourself out of that kind of stressful environment every once in a while. I didn't grow up in a very strict family. My parents would joke that I grew up to be so assertive because they spoiled me as a child. I would get together with the other children to climb trees. Whoa, Paimon would have never imagined. But even as rambunctious as I was, when it came to needlework, I was as quiet and focused as could. It was as if I discovered a whole new world within those vibrant... My parents noticed, and they sent me to study under a famous Inazuman tailor. It wasn't हाँ long before I had इनाजुमन driven away pretty टेलर much every देखा master tailor on the archipelago. You could say I really tried their patience. You were that misbehaved? I wasn't misbehaved, exactly. I just often had strange ideas when it came to fashion. Ones that weren't in line with traditional ways of doing things. On top of that, I hated the idea of groveling. Anyway, a few incidents later, I soon found myself without a master. Worse, not one shop. No wonder you left Inazuma. I was angry and frustrated. So, before I left, I swore to all those masters that my brand would one day become renowned all over Teyvat. Well, that's a great dream to strive towards. After that, I came all the way to the court of Fontaine, a city often referred to as the capital of arts. I had a lot of fun starting out. Sure, I was living in a small cramped room. I had a far more naive view of fashion. Of course, as I spent more and more time in the industry. Oh, yeah, she did mention that dream. I'll be honest with you. Who would have thought? Even as I continue to pursue my dream, my work has also become someone else's. Alright, that's enough sightseeing for one day. Time to come up with a way out of this mess. Ooh, looks like you've got your game face back. Back? It was never gone to begin with. I did say I wasn't upset, didn't I? Paimon thinks we should look for evidence that Uter wrote that article. Charlotte's already working on an article to address all those nasty rumors so we can publish all our... I don't like duking it out in the press. I know where Uter's clothing factory is located. It might be a good place to start looking for some Sounds good. As for... Huh? But your accessories! Didn't you say your designs were unusable without... Well, it's true that I haven't quite figured out. To tell you the truth, even here in Font, thinking about... The sea. got... what? Come. Chiori! चलो खैर बहुत दिन बाद कोई स्टोरी क्वेस्ट मिल Jump into the sea all of a sudden! Paimon, what do you think is the most beautiful thing in the sea? A Lumitoile? Or a pearl, maybe? Oh, coral's pretty too. Ah, Paimon gets it now! You want to use things like that as the accessories for your designs! Well, now that you hit the nail on the head, help me grab some, would you? Leave it to us! इसको यूज करेंगे अपन क्लोथ्स में Chiori, will these do? Everything looks great. I've also collected a pretty big batch, so we should have enough. Great! So are we gonna head back now and make some new designs? Yes, but don't forget, we've got more than just the designs to worry about when we get back. हाँ और क्या करना पड़ेगा Okay, we've got the materials for the accessories.
Next, we'll need. You mean we... Oh no, skipping out... Ganyu? A friend of... Well, anyway, sleep is important. You're not gonna convince Paimon otherwise. Well, गानियों की बात चली थी, मैंने one skip thing's कर for दी. sure, though. What else can we help with? I suppose all there's left to do is. You got it. Wait, what did you just say? You heard me. Tear them all up. When I went to that first fashion week, I had no savings to speak of. I had to make something. If it worked back then, why not now? We can also repurpose some of the ready-to-use accessories in the shop as well. I know. That's why I refuse to let it all go to waste. I'm not going to let them win, even if it takes everything I've ever made and more. Okay, then... Here goes nothing. No need to be nervous. I won't hold it against you. Of course, if anyone dared to tear up one of my dresses in front of me on a normal day, I'd probably toss them into the sewer. Just this once, though. I think I can make an exception. Go ahead and tear them up. Think of it as a good way to vent your emotions. Dismantle the clothes और कैसे करेंगे? Okay, sit. यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते. Oh, okay. तोड़ना है क्या? Good job. That should do it. Chiori, are you all right? Sorry for taking so long. I got caught up and... Whoa. What happened to your shop? Who did this? Those monsters. Slandering you in the papers wasn't enough for them, was it? They even sent people to wreck your shop. Give me their names. Since they're all too eager to tear up other people's clothes, I think it's about time the Spina di Rosula return the favor. Maybe you should calm down a bit first, 'cause you see... Huh? Ugh, what is this, a soap opera? I was the one who asked the traveler to tear up the outfits. We need all the fabric and accessories we can get. Oh, so that's what happened. I guess I got a bit ahead of myself just now. Back to what you were doing, everyone. You can all just pretend like I didn't say anything. Navia sure is scary when she's angry. If there's one thing I can't stand, it's a false accusation. No one's gonna orchestrate some conspiracy. You and Chiori are really close. Of course. Everyone knows that Chiori makes the most gorgeous outfits in town. All of the Spina di Rosula's formal wear is custom tailored here. Now, if only you'd give me the contract for your uniforms as well. As if you'd enjoy designing something as boring and formulaic as a uniform. That's why I didn't ask you in the first place, silly. Plus, with how much your intel has helped us out in the past, to the Spina, you're more of an intelligence agency than a fashion boutique. If I had it my way, it would be the other way around. Anyway, we both know why I'm here. Tell me, how can the Spina be of service to you? If it's not too much trouble, can I borrow some skilled hands to help with some simple sewing work? I'll need all the help I can get if I'm going to finish these outfits over the next few days. Oh, no problem. I've got a few of those guys all ready to go. I just knew you wouldn't be intimidated into withdrawing from this year's show. When are you going to get started? I can help with sewing too. Actually, there's something else I'd like to ask of you. Ask away. Oh, and Traveler and Paimon, could you help me pass word to Linny and Lynette? I'm done with my interview. Has Miss Chiori made it back yet? Oh! What happened to the boutique? Who did this? Give me names. I'll make sure every last one lands a full feature on the front page of the Steambird tomorrow. Not this again. I'll catch up. Lenny and Lynette, ये रहे. Lenny, Lynette, great, you're both
A moment later and you'd have missed us. We read the article in the papers. We were just about to go find Miss Chiori. She helped design a number of our costumes in the past and even sponsored one of our performances. The time has come, it seems, for us to return the favor. Oh, perfect! She was the one who sent us! In that case, I assume that there's something we can do to help. Just say the word and we'll take care of it. Okay, so it's like this. यहाँ इतना चमक क्यों रही है पैमन? Is that all we'll need to do? Should be a piece of cake for the two of us. I'm glad to hear it! Well then, guess it's about time we go and find some evidence for all the bad stuff Uterra's been doing, right? Chiori said we shouldn't disturb her over the next couple of days. We can check in with her again once she's done with all the... But the show's in another 2 days, isn't it? Will she be able to... Well, according to her, she wants to first beat Uterra fair and square at the show. A two-pronged approach? Courtesy first, confrontation second? Yeah, something like that. Understood. Then we'll have faith in her decision. Alright, we're counting... Okay, then let's also do it... Oh, Paimon sure hopes she won't have a hard time making all those new... Wait until 2 days later. अच्छा, अपन को इन्वेस्टिगेट नहीं करना क्या? You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Oh, you're here. Chiori! How are the new outfits coming along? You look kinda tired. Just a few steps left now. I've handed the rest over to Alof. We should be able to make tonight's show. Wow, that's cutting it real close. Don't worry. I have no intention of giving ground on either front. Okay, Paimon totally gets that this is all his fault. His factory is usually open to the public. It may not be open for... We're just curious customers after... Well... मुझे इन्वेस्टिगेट करना है या नहीं? Right over there. Why? अच्छा, We have करना है. different marketing strategies. While I specialize in... Alright. You make a good point. Let's all be on our guard. करनी तो है इन्वेस्टिगेट. शायद उसके डोमेन में भी भेजे. ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या टर्टल? वाह भाई. मुझे लगा ही था डोमेन में भेजेंगे ये लोग. खैर यहाँ पे अपने चियोरी भी ट्रायल कैरेक्टर में मिल सकती है मे बी. मिल गई. We're in. There really is nobody here. Welcome, dear visitors. Paimon nearly fell out of the air. What is that thing? A mechanical guide. They usually use a recorded tape to give you a tour of the factory. Please follow me, dear guests. अबे अच्छा, ये खोलेगा क्या दरवाजा? First stop on our tour is a look at the gradual evolution of our clothing brand. अबे चल शांति से, मुझे नहीं देखना कुछ.
After that, we welcome you to peruse our most popular styles. Huh. Lothair seems to be doing pretty well for himself, doesn't he? Why would he feel the need to bother you when he could just focus on improving his own brand? This is the studio where our designs are made. Please, take a look around. These are the fitting rooms. Please use them at your leisure. Huh? There seems to be something in this fitting room. यार दो कैसे? एक मिनट, अपन 2 स्पॉन कर सकते हैं या? नाइस, पता नहीं। Why did the door just close? Hold on tight, Paimon. लेफ्ट है ना ये? It seems to have stopped. यहाँ लड़ाई होगी। Seems like we're someplace deeper inside the factory. I must leave no stone unturned. Look out! There are guards here! Make way for the adept. Next customer. Teamwork is dreamwork. Time to clean up. Someone needs assistance. I'll catch up. पूरा वाह, Someone needs assistance. ये पूरा उसकी तरह नहीं लग रहा? पॉपी प्ले टाइम, अगर किसी ने खेला हो। सेम फैक्ट्री में अपन आ गए। Filthy. Look over there. Ugh. That water looks super nasty. Oh, Paimon can smell the stench from all the way over here. And I was the one using unsafe materials, Uter. So he was actually the one who opened an underground factory. No wonder his clothes always felt weird to the touch. He's been using all manner of tricks here in a bid to cut costs. Should the clothes made here even be worn? Never mind issues with shrinking and fading. These materials can give you skin problems if you wear them too often. That's terrifying. Let's take some photos right away as evidence. This way he won't be able to try and deny anything in court. All right. चलो, एविडेंस तो मिला। ओके। Doesn't look like there's a path here. Follow me. Let's go up. एक्सप्लोरेशन में मजा आएगा वे, ये सही है। This place seems... what's going on? Our way in's been blocked. Seems like he knew we'd be coming. You did say he knew you really well, didn't you? Yes. And that's because we used to be partners. Wait, you're practically at each other's throats. Now you're telling us you used to work together? When I first came to Fontaine, we were both fledgling designers who longed to gain a foothold in the world of in the beginning, we both wanted to make clothes that would stand out from the crowd, but with every criticism we received, and every sponsor that rejected us, Uter's confidence disappeared little by little. Finally, right before Fashion Week, he came to the conclusion that we wouldn't be able to make the designs we always dreamed of, and we parted ways. For my part,
I gambled it all. You received the acclaim of all Fontaine while Uter gave up on his dream and turned to making this sketchy stuff. I don't know the exact details of what happened. He's just jealous of what you've accomplished. A guy like that doesn't deserve your sympathy. Well, let's focus on getting out of here first. Missing the show is as good as letting him win. There are some control panels over there. Oh, that doesn't seem to have done anything. That didn't do anything either. पूरा पॉपी प्ले टाइम है भाई। वैसे 3 आ गया, उसका खेलना है मुझे किसी दिन। Steady as stone. Look over there. Seems like there's a way out. Maybe we can use these mechanisms to get higher. Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. इसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, लिफ्ट ही तो है। Unauthorized intruders entering expulsion mode. Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. We finally made it out. Why does it feel like the movement patterns of those mechs have changed? Warning. Unauthorized intruders initiating shutdown procedure. ओके। मेरे ख्याल से क्लाउड इटनरी यूज़ कर लेता हूँ ना मैं। Unauthorized intruders initiating shutdown procedure. Skyward! Scatter! Warning. Unauthorized intruders initiating shutdown procedure. खैर अपने मॉन्स्टैड में भी तो अपना बिजनेस रन करने वाला इवेंट आने वाला है। अबे क्या गंदा पानी है। We're finally out of that stinky place. Let's take this evidence and get out of here. Finally, the entrance! At last! अबे इनको हराना तो इजी है। Oh, those chambers couldn't hold you, I see. What a surprise. We've collected a bunch of evidence on all the nasty stuff happening at your factory. You're not getting away this time, Uter. The evidence on your person, you mean? What makes you think I have any intention of letting it get past these walls? अबे चल बे, ये रोकेंगे हमें। More mechanical guards? Really? Ever thought about using these funds for a legitimate purpose? Oh, but this is a legitimate purpose. What? Destroying Chiori Boutique? Or continuing to make your rotten... Proving that fashion is merely a laughable...
Spare me the lecture, why don't you? Fashion? Well, once the Yeah, people well, witness their former darling's spectacular fall, they'll That's what you've been trying to prove all this time? You weren't like this before, Uter. He realized long ago how utter— You gave up on your dream. But that wasn't enough, was it? You had to find— You think you— This whole thing, Uter. Pathetic. Why don't you take a look in the— You're right. Maybe all those who pursue their dream, but more pitiful still are cowards who are too afraid to even You! Yeah, just leave this guy to us! No. You go instead. But he has a gun! It'll be fine. Just go to the venue and tell everyone to proceed with the plan. I'll deal with him. Some less. Catch up with us soon? Trying to leave, are we? I've held back all this time because of our past partnership, Uter. But all that changed after our tour of your factory. Still trying to talk tough, No matter what you— If I may borrow the words of a friend, a guy like you doesn't deserve my sympathy. Allow me to show you the true meaning of the Chiori brand. मुझे फाइट करनी थी The यार. Chiori brand represents more than a person or a trademark. It's a way of life. Greetings, friends at Fontaine Fashion Week. Please feast your eyes on the extravaganza that Chiori Boutique has prepared for you today. Brilliant, dazzling, and wholly unique. And most importantly, An enduring, never say die spirit. That's the true meaning of the Chiori brand. And now, let's welcome the thundering seamstress, Miss Chiori herself. Did Chiori not... lights, cameras, over here, please. Let the show begin. The world may change, Oh. fashion along with it, but Chioria will remain the same. No challenge is too great. Chioria caters to no one, not even the times. सबके कपड़े क्या लग रहे हैं Chioria भाई. will always lead the fashion of our time. Finally, let's not forget. Only those who do not give up on their dreams are worthy of this brand. Well then, I suppose all that's left to say is, Happy Fashion Week, fellow dreamers. वो एविडेंस का क्या हुआ? How about this? A little more to the left. Like this? Perfect. Phew. Oh, that looks great! Of course. I didn't know you'd make a brand new signboard. I made it before Fashion Week. I figured it'd be best to put it up after the success of the show. Well, how can you become renowned through all of Tevat without a fancy signboard of your own? The Spina's way ahead of you in that regard. Now that you mention it, perhaps our magic troupe could use one of those. Our signatures are the Grinmalkin cat and the Bogglecat box. Oh, and we need to add Pear as well. Pear would need an alias, of course. How about... the Hangry Bird. Hangry Bird? So, does that mean your signboard is going to be 2 cats and a penguin stuffed into a single hat? Ooh, that sounds super snuggly and warm. And a bit cramped.
Miss Chiori, I'm done taking बारिश हो pictures. रही है क्या You can बाहर? expect the लॉल। article in tomorrow's Steambird, along with the evidence the Traveler gathered. Thank you, Charlotte. It's my pleasure. Bringing the truth to light is a journalist's duty. Going forward, feel free to custom order any accessories you need for Monsieur Verite. It's on the house. Huh? You really mean it? Of course. The same goes for you too, Linny and Lynette. If you have need of any costumes in the future, just drop me a note. What about something other than a costume? Thank you, Chiori. It's much appreciated. Well, I don't really need anything. Just don't be a stranger, all right? I don't need anything either. So long as you continue to request my international courier services from Komania Express, we're golden. Actually, that reminds me. When will you be leaving, Kirara? Huh? About that. The Spina di Rosula has prepared a special vehicle for you, so you can just get in and we'll push it all the way out. What? No, that's so embarrassing. Ooh, do we get something nice too, Chio? Of course. Just hold on a second. Disrupting public order at the show, appropriating venue lighting equipment without authorization, using weaponry in public, hosting a dangerous performance without notifying the authorities. Chevrolet, we can explain! If you come across anyone who matches those descriptions, please report them to the special patrol at your earliest convenience. Enjoyed that, didn't you? You nearly scared me half to death. Says the one who pulled that stunt earlier. How about you do me a favor and tell me in advance next time you're planning something like that? And if I had, would you have approved? No, but it would have at least spared me a whole lot of anxiety. Well, I would say I more than made it up to you, have I not? All right, I won't argue with you. Well, friends, I would say we've earned ourselves a nice meal for our efforts. Let's go. Spina's treat. I'll have to take a rain check. I've still got a lot of paperwork to take care of, so you all go have fun. Oh, by the way, Chiori, I ran into Vanger on the way here. He had a message for... I don't need to hear it. I'm sure the old fool used pretty much every apology in the book. I'll just visit him. You know him well. Thanks again, Shelfress. My pleasure. Oh, and one last thing. That was really quite an amazing show. You don't say. All right. Follow me if you want in on the celebration feast. Come on, we're leaving. नाविया पुल करूँगा मैं. Traveler, Paimon, could you go wait for me at that place with the view? I'll let Navia know that we'll be a little... A place with the... Perfect. I'll be right there. 600 फिर से वहीं. Sorry to keep you waiting. Oh, we didn't wait long at all. But what did you want to give us that you couldn't share right in front of everyone else? Here, take this. What? Oh, wow! A brooch! And in the style of Chiori Boutique, too! Wait, Paimon gets one as well? I've only made 2 for now. After much consideration, I decided to give them to you two. You've been a great help. Even when things were looking bleak, There were even times when I felt like I had to fight back and win. Even if it was just to honor the trust that you had in me. Well, we may have helped a little, but Paimon would say you deserve most of the credit. This result, it was all you, Chiori. I know for certain that was not the case. I've chased my dream for so long that I've come to understand something. Apart from conviction and a single person can only do so much. Without all your help, Chiori Boutique could have easily fallen to ruin. Well, Paimon doesn't think it would have ever gotten to that point. Not if you had anything to say about it. Perhaps my words were a little... I'm confident in... Well, guess there's nothing to worry about. Should we go back and join them at the victory feast? Oh, yes, of course. But before that, I'd like to admire the view for just a little while. You know, of all the nights I've spent in Fontaine,
खत्म। ऐसे अपने को गिफ्ट मिला ना, वो क्या इसमें आएगा क्या? ट्रैवलर लगा के तो घूमेगा नहीं। Everyone's laundry is. There's still a long. नहीं, ट्रैवलर तो नहीं घूम रहा लगा के। Oh, how it. ओ फाइनली 80 होने वाला है ना। नाइस। नोएल का सबसे लास्ट भी हो गया, डिफेंस भी बढ़ गया। अब बस टैलेंट्स पे फोकस करना है अपने को। प्रीमोस तो हुए नहीं होंगे। 106। Leave it all to me. Busted. Yeah, got her. किसी बॉस से लड़ के आता हूँ, इसी को मार के आता हूँ, फिर चलेंगे अपन वैलोरेंट हो, क्योंकि अभी इवेंट वगैरह कुछ है नहीं करने को। Someone needs assistance. Yeah, skyward. Got her. Yeah, skyward. Got her. Ha! Everybody stand back! Game's up. Home silver. Stray clouds converge. Time to clean up. Steady as stone. सात हजार क्यों पड़ रहा है? ये जियो रेजिस्टेंस लगा के आएगा, फिर इससे नहीं लड़ते अपन। एक्चुअली चलो पहलो खेला जाए, वैसे भी एम प्रैक्टिस करनी है अपने को। नाइन्टी तो नहीं करूँगा अभी मैं इसको, 90 करने के लिए बहुत लोग बचे हैं। Leave it to me. All of it, whatever it is. What exactly is it? Leave it all to me. Leave it all to me. चलो पहलो ऑन किया जाए।
एक्चुअली मैंने अभी पूरी सेंसी चेंज की है, तो थोड़ा खेलना पड़ेगा गेम प्रैक्टिस के लिए। चलो मैं अभी क्या बोलते हैं, कैम बंद कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद ऑन कर लूँगा। गेम कैप्चर वैलोरेंट, तो चलो जब तक वैलो ऑन हो रहा है मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। आ गया मैं। थ्योरी मिल गई क्या भाई? नहीं, थ्योरी एक्चुअली मैंने निकाला ही नहीं, ट्राई किया बट उतनी खास लगी नहीं मुझे। थ्योरी से अच्छी नाविया वैसे है, उसका वेपन अच्छा लगा मुझे, वो निकाल सकते हैं अपन चाहे तो। ऐसे तो मुझे एट्टो का वेपन चाहिए, बट वो भी मिल गया, दोनों में से कोई भी तो चलेगा मुझे। हेलो। क्या क्या चल रहा है? मैच हार रहे हो? क्या चल रहा है? मैच हार रहे हो? हाँ, मैं जानबूझ के हार रहा हूँ, डी रैंक कर रहा हूँ। अच्छा। ये वाले में तो कोशिश की तो भी नहीं जीत पा रहे, बाकी वाले में तो बढ़िया। देखो ये लास्ट मैच में इसने क्लच कर लिया, जो लोएस्ट प्लेयर था ना हम्म। वो भी लग रहा है वो भी डी रैंक कर रहा है, क्योंकि अभी उसने ऐसा खेला है, क्या कहूँ, इतने क्लीन एम, काफी मैं ज्यादा तो क्लीन अपना एम। सेंसी पूरा चेंज किया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरा वापस ये आने में। क्या सेंसिटिविटी क्या की है? कम किया, कम किया। 3.1 से भी कम किया है? नहीं, डीपीआई कम कर लिया। डीपीआई कितना किया? 3.1 नहीं था, 0.31 था भाई। हाँ 0.31 था पॉइंट थ्री उसका। वन डीपीआई कितना? डीपीआई था 1800, अभी 800 किया। तो मैं तो आपकी सेंसिटिविटी में ही खेल रहा हूँ। अच्छा। मैंने आपका 3.1 किया था, मैं 800 डीपीआई पे खेल रहा हूँ। एम बहुत क्लीन हो गया मेरा थोड़ा बहुत। 800 डीपीआई, नाइस। हाँ 800 डीपीआई 3.1, और कभी कभी अगर थ्री थोड़ा पॉइंट टफ वन लगता या है तो 0.31? 0.31, और नहीं तो कभी 0.5। हाँ फिर सही है ये तो, फैंसी।
मुझे किसी यूट्यूबर्स ने ही कहा था कि है ना ऐसे करोगे ना तो एम वगैरह क्लीन रहेगा, हाँ थोड़े कम सेंसी जितना एम कम बढ़िया रहेगा, रहेगा। हाँ तो उतना सही रहता है। अब जीत रहा है पता नहीं क्यों। बढ़िया है जी तो। मैं भी जरा एम देख लूँ अपना। अभी खेल रहे हो? हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। ये हार नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हार रहे हैं। कोई कोशिश कर बात रहे नहीं, हैं। खेलो खेलो, तब तक मैं इधर बैठा हूँ। हाँ ठीक है। आ, फ्लैश को भी कॉल करो, फ्लैश शायद तक आ जाएगा। अच्छा। आजकल वो मैंने एक नया है ना जुआ खेलना शुरू किया है, अरे उधर से थोड़े पैसे बनाए हैं। मैं वैसे मैं ऑनलाइन लाइव क्लास। हूँ, पहले बता दूँ। तो रहने दो, मैं कुछ नहीं कह रहा। नए कले से हो जाएंगे और प्रमोशन प्रमोट कर दूं मैं? हाँ अभी ऐसा भी कोई देख नहीं रहा, एक आध बंदे होंगे। तो यार हार नहीं रहे हैं। और मैं ईसो मेन बनने का ट्राई कर रहा हूँ, काफी टाइम से ईसो कर रहा हूँ। बढ़िया। सस्ता देना कहते हैं इसको, है ना? महंगा रहना है वो। ये महंगा देता है। हाँ रेना के लिए भी थोड़ी कम स्किल चाहिए, बट आईसो के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, स्किल पे ही डिपेंडेंट है वो। हाँ स्किल वो उसका अल्ट। अल्ट भी है उसका वही, और ई भी वही है, जब तक मारोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, और मारने के बाद भी एम लगाना पड़ता है। हाँ वो और के लिए और टाइमिंग बहुत कम मिलती है। नहीं अभी तो बढ़ा दिए लोग, पहले और कम थी पता है ना भाई उसकी साहब। टाइमिंग और कम थी। हाँ इसमें मतलब यूँ है, अगर किल करते हो और हाथों हाथ रिलोड करते हो ना तो तुम्हारे पास 0.3 सेकंड होंगे क्या उसको और कलेक्ट करना है। ऐसा करो। चलो हारा मैं। तब मैं शायद तक अपनी ओरिजिनल रैंक पे। आप सिल्वर नोट से पार्टनी नोट से क्या क्या क्या? इसको बुला लेता हूँ, योगेश को बुला लेता नहीं नहीं मैं प्लैट ही हूँ। हूँ। नहीं नहीं यहाँ सिल्वर है ना। हाँ ये दूसरी आईडी है ना। तो गोल्ड नहीं बचाया मेरी तरफ। गोल्ड किया था फिर वापस ले आया, डी रैंक कर रहा था। मुझे बस ये हल्की सी 500 और एक्सपी चाहिए, फिर और इसकी मिल जाएगी ऑपरेशन। बढ़िया। कहाँ पे है? बाहर कहाँ पे क्या कर रहा है? तो कितनी देर में करता है? और उनका क्या किया उस गेम वाले का? मैंने 100 रुपये डाले। उसके बाद तूने कितने की? 125 की। अंदर कुछ नहीं था भाई, मैंने पहले वाले में एफपी बैट लगाई, मैंने 50 की दोनों। आले तुम लोग जुआ दोनों में हुआ। हार गया। जुआ ही है एक तो। क्या तूने क्या किया? Revealing area. तो मैं विड्रॉल कर लूँ? चल ठीक है तो कर ले। नहीं आप पूरे तो आ जाएंगे, तो बाद में वापस डालना पड़ेंगे ना। इनका मिनिमम अमाउंट है क्या? 100 रुपये डालो। चल ठीक है। हाँ अब तू भी कहीं देखना मुझे ऑनलाइन हो सके तो। साला सेंसी चेंज करने के बाद लाइट चली गई, अब एफपीएस कम हो गया। हाँ एजेंट अनलॉक करना है, भूल गया। ये बैटल पास खरीदने के बाद थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं क्या? एक्सपी मे बी। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी मेरे 8,000 रुपये हो गए। अच्छा ये किंगडम क्रेडिट्स किंगडम क्रेडिट मे बी। अभी वाइपर अनलॉक किया, वाइपर के लाइट चली गई, अब एफपीएस कम हो गया मेरा। अभी खेल रहे हो ना या फिर नहीं? हाँ खेल रहा हूँ। कॉपी लगा क्या लो। करे? 1 मिनट बाहर आया।
रेडी लगा लो। कोई और नहीं आ रहा? देखते हैं, पहले एक लगा ही लो बाद में। मैंने नया कोचिंग ज्वाइन कर ली, मनस्टेक। इसमें क्या करोगे? इसमें मतलब ये एडवांस है इसका, मेरे वेब डेवलपमेंट का एडवांस। बढ़िया। मतलब अभी जो 3 साल में जो जो नई नई लैंग्वेज रिलीज हुई है ना, वो है, हम्म वो सीखना है। अब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, आज पहली क्लास थी। हम्म Match ये found. कितने की है? ये भी सस्ती पड़ गई, 20,000 की। 45,000 की है ये क्लास, पर ऑफिस में जान पहचान थी तो 20,000 में पड़ गई मुझे। और इससे पहले PHP सीखा था ना, वो मुझे 18 में पड़ी थी, वो 35 की है। फिर भी उस इतना टाइम पे नहीं खर्चा सीखी कर थी। रहे हो। समझ रहे हो ना, मतलब सीख रहे हो ना। सीख रहा हूँ, हाँ, मुझे इंटरेस्ट है वेबसाइट फिर बनाने में। फिर ठीक बस है। वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा मुझे। मुझे चाहिए एक ऑफिस या फिर लाइब्रेरी या फिर कुछ अपने टाइप के, क्या है, ग्रुप चाहिए वेब डेवलपर्स का, नए नए जो सीख रहे हैं ना, जिनको सीखना है वेब डेवलपमेंट। एक्चुअली वो किसी को नहीं मिल पाता जब तक तुम बिल्कुल किसी कंपनी में नहीं चले जाते ना, तब तक। कंपनी वाले खुद के ऊपर लगे रहते हैं, और मुझसे सब बड़े बड़े, 20-25 से छोटा बी नहीं कोई। BTC ऑन टॉप, ये कौन है बे? बिटकॉइन कह रहा है क्या ये? मे बी। हाँ, बिटकॉइन है। मैं क्या खेलूं, जेट खेलूं या अपने नया रेज? कैरेक्टर आ रहा है 25 तारीख को, पता है? Just take a seat. हाँ हाँ, I got this. वो कंट्रोलर आएगा, कंट्रोलर। स्मोक करने वाला। हाँ, स्मोक वगैरह, और उसपे उसकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप उसकी कुछ है ना, उसकी कुछ मैंने रील्स देखी वगैरह नहीं है, आती है। बट हार्बर के बाद ये दूसरा कंट्रोलर आएगा। लास्ट अपने पास हार्बर आया कंट्रोलर था। कितने हैं? कंट्रोलर कितने हैं इसमें? देखना पड़ेगा, देख लो ना। ओमेन है, हटी गया। ओमेन है, ब्रिम है, वाइपर है, और हार्बर है, एक्स्ट्रा। एस्त्रा है, 5 हो गए। और कोई छूटा क्या? नहीं, मतलब जो जो स्मोक करते हैं, जिनका स्मोक होता है, वो सब कंट्रोलर है। हाँ, और जो ट्रैप वगैरह लगाता है वो इनिशिएटर, सेंटिनल। नहीं, सेंटिनल। सेंटिनल। और इनिशिएटर मतलब जो इनिशिएट करते हैं, साइड जाने से पहले रिवील वगैरह करके इनिशिएट किया जाता है ना, तो बंदों अपने को वो देख कर। उसमें आ गया सोवा। सोवा और सोबा हो गया, कायो। फेड हो गया, केओ हो गया, स्काई हो गया, ब्रीच हो गया। सेज भी आती है ना? सेज सेंटिनल है। सेंटिनल। हाँ, लोगों को होल्ड करने में सेंटिनल काम आते हैं। साइफर हो गया, और सेज हो गया, वॉल कर रैंडम सकता हो है। गई। हम्म और ये अपना ये किस में आएगा, क्या नाम उसका, लुक वाला है ना? कौन कौन? क्या नाम है उसका, जिसको स्नाइपर यूज करता है, वो उसका अल्ट। चैम्बर। चैम्बर। चैम्बर, हाँ। सेंटिनल ही है, वो भी ट्रैप लगाता है ना। उसके पास एक ही ट्रैप है बस। पहले थे उसके अच्छे ट्रैप थे, उसके अच्छे ऑप थे, उसका अच्छा हेडहंटर था, टीपी बहुत अच्छा था, सब नर्फ कर दिया। मतलब पहले टीपी थोड़ा पता सा है, एरिया बड़ा था। नहीं, पहले 2 टीपी लगते थे, एक इस साइड लगा दो, एक उस साइड लगा दो, तुम डायरेक्ट वाह। इस साइड से उस साइड टीपी कर सकते हो। जैसे जेट के पास 2 डैश थे टाइप। जेट के पास तो बहुत कुछ था। जेट को नर्फ इतना किया गया है ना, लाइक जेट का जो नाइफ अभी चलाते हैं ना हम लोग, हाँ राइट क्लिक करते ही खत्म हो जाता है ना, उसमें हाँ राइट हाँ। क्लिक कर करके 5 बंदे मार सकते हो, नाइफ वापस आ जाते थे। मतलब राइट क्लिक करके अगर वो किल होता है तो वापस आ हाँ, जाते तो हैं? वापस 5 आ जाते। और इस टाइम भला किल हो जाए तो भी नहीं आता कुछ? नहीं, वाह। इस टाइम एक एक करके किल हुआ तो फिर वापस आते हैं, वरना 5 एक साथ मार दिए तो खत्म। मतलब समझ लो, वो शॉट गन भी है और स्नाइपर भी है जेट का पहले। अभी शॉट गन नहीं बन सकता वो। वो अभी सिर्फ एक बस। गोली है, हम्म और उसमें भी वो लगेगा नहीं कभी कभी तो। थोड़ा नहीं दूर, लगता है। थोड़ा दूर हुआ। No charges left. लाइट चली गई, अब लैपटॉप का FPS बहुत गिर गया कितना आ रहा है? है। 50 60 70 यही आ रहा है, 5 6 7 अच्छा। की।
हेलो हेलो BTC on top. Dodge gone right side. Dodge gone to the moon भाई. Dodge. Dodge going to the moon. ये BTC मतलब पूछना पड़ेगा, शायद कुछ और भी बोल रहा हो. ये BTC बिटकॉइन नहीं है ना? है तो बट इथेरियम. हाँ भाई. इथेरियम भाई डॉज कॉइन. मतलब तो पीछे खड़ा हुआ है, बेस में खड़ा हुआ है एंडी का. क्या करना हुआ? अबे पास में मेरा सेंसी चेंज नहीं है. जेट कितना डैमेज दिया? नहीं जेट को नहीं दिया मैंने. अच्छा 52. 52 मैंने 52 ओवर हील्ड होगी. भाई बढ़िया मारा. अगर इसका एम लगता तो हम ले रहे हैं शॉटगन. मैं मुंह पे मारने जा रहा हूँ. चल रहे हो साथ? अरे मेरा एम थोड़ा अभी चलेगा नहीं, देखता हूँ. कोई ना. हाँ. अगर एम ना चलने पे भी टॉप पे रहता है ना, तो मेरा भी नहीं चलना चाहिए. बैंड की घोड़ी. मैं ज्यादा क्लिक करता उससे पहले उसने गोली चला दी और मैं मर भी गया. FPS डाउन. Spike planted. ये एम है देखो. हाँ तो दूर वाले को तो लग ही जाएगा. Last player standing. मैंने हुआ ना, एक गोली कहीं और लग गई ना. अबे इसके पीछे आके मार के चला जाएगा. गन बढ़िया लग रही है ना ये मेरी वाली. ये हाँ ठीक है. नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि चमकी डाल दिया हो. हाँ हाँ वो मैंने एक ट्राई किया ना येलो वाली रेडियंट पॉइंट खर्च किए, फिर वो तो और घटिया लग रही थी. नहीं ये कलर ठीक है. बस वो ग्लिसरीन ना होता तो. ग्लिसरीन तो नहीं होता. ग्लिटर. वेट तो देखो. What's up? Sorry in advance. No. Cover going out. हाँ ये आ रहा है. ये आ रहा है. चलो ये. बैंड के उसने Spike planted. मैं वेव कर दिया. Last player अरे कोई कवर के लिए नहीं था क्या पीछे? ये रहा ना अपना कवर. स्किन्स है इसके पास देखो. रहने दो. भाई वो नहीं है. साला एसेंडेंट बॉडी लगा के आया है. मतलब कौन सा? एसेंडेंट. फ्लैट के ऊपर डायमंड के ऊपर एसेंडेंट होता है. खरीदा है अकाउंट लगता है. हाँ खरीदा होगा. हालांकि क्योंकि एसेंडेंट कभी सिल्वर आ ही नहीं सकता. मतलब वो जितना भी कम चले इतना कम गंदा नहीं कर सकता. वाह रेना तो टॉप लेवल की है भाई. उसकी देखे कि नहीं. लाइट आ जाए बस. लाइट आ जाए तो मैं डंका खेल लूं. मेरे से कर ले लो. नहीं चलाओ. एटलीस्ट जीतना नहीं है हमें वैसे. हाँ और वैसे भी मैं टैप ही कर लूँ. एम पे ही खेल रहा हूँ ना. पूरा एम ठीक कर लूँ फिर स्प्रे भी करूँगा. Sit down. Nice. Oh yeah! Monster on the loose! Reloading. कवर दे हेलो. Reloading. Let us begin.
planted. अबे कैसे? One enemy remaining. लॉन्ग है। डंडी का वहीं बैठा हुआ है। Careful now. या ये Nice. कौन सी ये कितने की है? ये कितने की है? रहती है? सब सेम ही है, आसपास ही रहती है। 2300-2500 की होगी। हाँ हाय हाय तो वैसे मैंने अभी कोचिंग की फीस जैसे तैसे भरी है। मम्मी इन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि तू जाने तेरा काम जाने। अब तो कमाने लगा है तो अब खुद ही बस। आइसो बाय। क्या अभी जॉब वॉब कर रहे हो क्या? बाय बाय भाई। नहीं यही सट्टेबाजी। अरे सट्टेबाजी कमाना तो नहीं होता है। 35,000 कमाए थे। हाँ फिर ठीक है। और बहन की शादी थी तो सारे पैसे चले गए। पर रिस्क भी बहुत है। मैं अब मेरे पास 10-20 के अलावा ज़्यादा रुपए नहीं है। बट इतना कमा ले रहे हो वही बड़ी बात है। आ जाओ भाई नहीं, ये सट्टेबाजी नहीं कल थी, आएगा क्या? बहन के लोड वोमन कमाए थे वो थोड़ा सट्टेबाजी से तो बहुत कम कमाए थे। बाकी एक कोई थोड़ा काम था जीएसटी वाला ऐसा कुछ। Spike planted. One enemy remaining. ऑनलाइन कहने में गाइड बढ़ती है क्या कहूँ। Last player standing. Clutch. अबे हाँ वो एम थोड़ा देखा। माउस कितना मूव किया? मैं बैट पे खेल रहा हूँ। 800 FPS पे बैट पे। 800 FPS? हेलो हाँ 800 DPI पे। अच्छा ये FPS बढ़िया कितने तक का होता है? मैंने 144 लॉक करके रखा है। मेरा 200 आता है। ये कहाँ से किया है लॉक आपने? जनरल वीडियो मैंने ऑफ कर रखे हैं सब कुछ। लिमिट FPS कर सकते हो चाहो। मैंने कभी 400-500 भी देखा है मैंने यहाँ पे। 400-500 FPS। Last player standing. Embarrassing. Spike planted. Careful now. Flash. दौड़ गई। 147 खाई थी। पिस्टल था मतलब बस। 127। उससे पहले रेना से पहले इसी को हेड पड़ा था पता है, बट वॉल बैंक पर गई तो 127 लगा। अच्छा नहीं No charges left. नहीं रहने दो। अच्छा अल्ट कर रहे हो क्या? कर लो मुझे लगा वनरेबल की बात कर रहा हूँ। अरे वहां से मत करो। आ गया ओमन आ गया। वहां से नहीं किया जाता, आके कोई पेल जाएगा। क्या गंदा मारा हूँ मैं, क्या गंदा मारा हूँ बहुत गंदा। Spike planted. Last player standing. अबे आपको YouTube से रेवेन्यू मिला? नहीं अभी नहीं। कब मिलेगा? जब मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। कितना? सरेंडर कर दिया करो। रहना गेम डिलीट कर दे, तेरे बस की नहीं है। माँ छोड़ ली मैंने, बहन के लौड़े। अबे इसकी अलग चल रही है भाई, मैं म्यूट कर रहा हूँ। रेना और कौन है? गेको? रेना और ओमन तीनों कर लिया। बिटकॉइन Let's go. तीनों को कर लिया मैंने।
बी आ रहा है। Help. मिड कोई नहीं है। Come on, let's go. Careful now. Spike planted. Reloading. Stash is ready. My territory! My roof! I have them now! नहीं टूटेगा वो। Last player standing. क्या गंदा था। कोई वो ना। आराम से जा रही थी तो भी नहीं मार पाया। G-Man ready for a light show. ये स्पिरिट फायर को जानते हो क्या? कौन है उधर सामने? किसी ने नाम किया डिस्कॉर्ड पे है ना, जितने भी लोग हैं ना उनको ही ऐड किया मैंने, उनके अलावा कोई नहीं है, 2-3 जानों के अलावा। तो ये स्पिरिट फायर कौन है पता नहीं, किसने चेंज किया अपना नाम। रहने दो। Reloading. Show me a target. ये डैमेज है। Sorry, bro. सॉरी ब्रो। एक बार रहना प्लीज। Here. चलो। Need help. Breaking them. क्या 140 है डेडलॉक? The hunt begins. 140 रेना, 140 डेडलॉक। Last player standing. डेडलॉक मार ले। डेडलॉक 140 थी क्या? वैसे वो गन चला क्यों रहे हो? गंदी गन है वो। आउटलॉ? दूसरे राउंड में ठीक है। हाँ उसके लिए क्या एक गोली में मर जाता है। बाकी तो मार्शल और ये एक चलाओ एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों को डैमेज उतना को तो पड़ता है। 2 मार्शल भी मारोगे तो मर ही जाएंगे। रहना को क्या है वो कर दिया। One enemy remaining. ऑपरेटर उठा लो। Flawless. Reloading. You see that? Tell me you caught that. They mess with one of us, they mess with all of us. देखो ऑपरेटर तो और गंदी चलेगी मेरी इस सेंसी पे। What's up? कॉमन ए चले जाना। Yes. What's up? ए पे। ओके Shadows traveling. वही था। हाँ तो वो कहाँ जाएगा? मुझे लगा यहाँ लॉन्ग से मारा होगा। कह तो देते, मैं वहाँ आराम से ऑपरेटर लेने जा रहा हूँ। मजा आता था। Is ready. Spike down A. One enemy remaining. इसका रिलोड मुझे बढ़िया लगा। किसका? इसका ये वाली रेना का दर्द।
अच्छा Spike here. और भी डाल Last round before the switch. This is it. Get those guns. कुछ टाइम लगता है जैसे रेडियो एक्टिव कोई चीज डाल रही हो। केओस नाम है ना उसका, प्रील्यूड ऑफ केओस कोई करेगा। तो उस हिसाब से जो न्यूक्लियर ट्रेन है। बोल भाई। आराम ज्यादा वो मुझे गालियां बोल रहा है महाकाल भाई। कौन? ये रेना रेना। तो तुम्हें भी म्यूट करता हूँ और तुम भी गालियां दो। ना मुझे कोई नहीं। मैंने कल परसों रील देखी थी एक, वो गुरुजी की। क्या है कौन ना, ये गुरुजी? बहुत किया है तो गालियां वगैरह क्यों देते हो? राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। बोला हम भक्त आदमी बन गए। अरे मैंने आपको मौके पर कर दिया। Player standing. म्यूट करना बनता है। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उन्हें ही वनरेबल कर दिया। मेरे ईसो में यही प्रॉब्लम है। हाँ तो सबको म्यूट कर लो ना। You want more? Here's more. ये अलग सोच है, आराम से तोड़ सकता था, इतनी दूर से आ रहा था। Switching sides. वो रिपोर्ट मारने को गया था। सरेंडर मार लो। Tactics, keep it fresh, yeah? मैंने F5 कर दी। मैंने ही भेजा है। अच्छा मैंने ही भेजा है। आपने म्यूट किया है ना उनको? क्या कुछ बोल लेगा? बहुत कुछ। हमें मुझे भी। ना तो क्या फिनिक्स बढ़िया खेल रहा है, बाकी सबकी वाह सिंपल सा वर्ड इन्होंने बस यही कहा है। उसके बाद में तो इन्होंने जो जो नई नई चीजें इन्वेंट की है ना, वो क्या ही कहूँ। यहाँ पे ट्रेन है उसकी। On my way. हाँ इसके ट्रैप्स किसी काम के थोड़ी हैं, धीरे धीरे चले जाओ। Watch your eyes. गेम खेल रहा हूँ। शायद तक लिमिट तो नहीं है विड्रॉल करने की, पर 10-15 मिनट में आ जाएंगे। वाह 209 आए हैं अभी। क्या 209 आ गए? निकाल दो। तूने अभी बढ़ाया है क्या? Last player standing. तूने बढ़ाया है? भाई तो पूरे ही निकालो ना। Planted. पीछे आया इसके। चल ठीक है, मैं निकालता हूँ जितने तुम। भाई किस बात, इस वाले में थोड़ी दूंगा मैं 100 रुपए। कैसे 100 रुपए? इस वाले कौन से रे? I'll make them remember. कौन सा? कौन सी बात कर रहा है? नहीं एक बार समझा तो सही, मुझे पैसों का समझ में नहीं आ रहा। हाँ बस करना। तुझे देना है मुझे 350 नहीं 250। ये नहीं, ये मैंने तेरे ट्रांसफर किए थे ना तेरे उसको जैन को। कैश नहीं चाहिए मुझे, कैश में से कभी हैंडल होता ही नहीं है। और गालियाँ कम बोल। कन्वर्टर। ओ हाँ कन्वर्टर हो, मुझे लगा कोई कन्वर्टर गेम निकाल कर रहा है। मैं मिल गया था, तूने अभी याद दिलाया। डेढ़ से उसके है। पढ़वा देख तो मेरे पैसे, तू मेरे पैसे नहीं, मेरे पैसे से मुझे कर्जा होता था। क्या No charges left. Last player standing. 50 रुपए हुए ना? 50। One enemy remaining. 100 कमाए तो 50 मेरे 50 तेरे। अबे भाई हिसाब रखो, क्लियर रखो हिसाब भाई। मैं 50 का लॉस क्यों खाऊं? So, do we mix it up? Double down? Let's talk. Reloading. देख सुन, तुझे
टोटल तुझे देते हैं 250 एक मैंने अभी ट्रांसफर किया वो और 150 वो, तो कितने हुए? 400 रुपए हुए। 400 में ये वाले तू देगा मुझे 100 रुपए, ये मैं काटता हूँ, चल ठीक है। It begins. ठीक है, क्या देगा कब ये पूछ। Shadows traveling. मैं सारे नहीं करूँगा, 100 तेरे लिए रखूँगा, जुआरी आदमी। Our spike carrier's down. तू मेरे अकाउंट से ही down, खेलेगा, B. मेरे अकाउंट में। मेरा अकाउंट देना भाई, पैसा मेरे आंखों के सामने रहे। जिस दिन तेरा अकाउंट प्लस में गया ना, उस दिन मैं अपना पैसा ट्रांसफर कर दूँगा। वो कौन दे रहा है रुपए हैं? उत्तम दे रहा है वैसे? बढ़िया भाई, बढ़िया। Destabilizing. किसकी वजह से? उत्तम की वजह से? Get him, wingman. तो उत्तम की गलती क्या? उत्तम ने पैसे दे दिए, यूं? Got the spike. One enemy remaining. वाह भाई। Breaking them. Saw भाई, you, Mosh. तू इतना आराम से कैसे बोल रहा है कि 30 अपने माइनस seconds में चले left. जाएंगे? बैकस्टैब। Run, little man. रुक जा, मैं गेम में हूँ, मुझे आज भी समझ आ रही है। Last player standing. वो डैमेज है। हाँ, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ और तू मुझे 400 देगा। तू 400 देगा भाई। हाँ, वो सेम टू यू। हाँ, चल ठीक है। और तू गेम में आ। तेरे रैंक प्लस कर दिया तो महाकाल खेल रहा है, अगर रैंक प्लस करा दिया तो। चल ठीक है, बता कितने रुपए? ये भाई बहुत गंदा है। क्या बना के दे दिए? 5-6 तुझे फ्री में बना के दे दिया और हरामजादे मुझसे नहीं तूने लोगों से बिना पैसे लिए उनको चीजें बना के दे दी। मैंने हरामजादे रिज्यूमे के पैसे दिए हैं तुझे। बड़वे नहीं अपने लोगों, अपने दोस्त के लिए तू है ना, इतना भाई के लिए इतना नहीं कर सकता कि फ्री में बना के दे दे। और लोगों को दया कर रहा है। करता ही बड़वे है। Nice. Dream big, make it happen. Nah. वो भी मैं ही बताऊंगा ना मेरे। क्या हरामी इंसान है भाई, जैसे हरामी इंसान नहीं देखा मैंने। क्या? मैं Valorant खेल रहा हूँ, मैं वो जुआ नहीं खेल रहा। The hunt begins. Plant the spike. Reloading. Crash is ready. हाँ, तीनों के तीनों हुआ। चल ठीक है, मैं विड्रॉल कर रहा हूँ। Enemy spotted A. और 2 सेकंड। काट दिया। Crash is going again. म्यूट कर दिया मुझे। किक को? मुझे नहीं। I flash से बड़ा जुआरी और मस्त जुआरी कोई नहीं है। इस आदमी ने मुझे कितने कमा। Last player standing. Blow him up, Mosh. अभी तक खांसी ठीक नहीं हुई? हो ही नहीं रही है। कितना टाइम, कितनी दवाइयाँ ले ली, 20 दिन हो गए। Match point. अरे ज्यादा दिन हो गए फिर तो। डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह दूसरा कुछ है नहीं। अभी मैं जाऊंगा, कुछ फ्लैश पैसा देना तो मैं डॉक्टर के पास। अरे अभी जाऊंगा ना, ये मैच खेलने के बाद या इसके बाद एक और खेलूंगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके आऊँ एक बार और।
नेट क्या हो गया ये एकदम बेकार चलने लग गया। Cover going out. Reloading. बेकार ही चल रहा है। Show me a target. Last player standing. किसी ने कुछ नहीं देखा भाई। ये वोमन यहाँ क्या करने है? Get out of my way! Oh yeah! Monster on the loose! रेडिएंट वालों का फायर ऐसा होता है क्या? घंटा। Defenders win. ये रेना चली भी गई ऑलरेडी। जीजीएस की जगह जीजीजी क्यों लिख रहे हो? गुड गेम गाइस। जीजीएस का मतलब क्या हुआ? मुझे क्या पता। मस्त वे सिल्वर 1 आ गया, मैं आयरन 1 जा रहा हूँ। मैं मस्त अपने ब्रॉन्ज 3 में 2 की है। मेरे स्किन आ गई। तो जॉय बॉय में ये परफेक्ट रहेगा। अब मुझे जो कार्ड मिला है ना, ये अरे एकदम उसकी बढ़िया। ऐड दिख रही है। दिख रही है। अभी करो भी तो देख रहे हो ना? आप तो देखते ही हो। स्टार्ट करो। तो कोई एक जानी है, ये पता नहीं मैंने अभी अभी किसी को ऐड किया है, वो आ रही है या नहीं। रैंक इनवाइट भेजा है। ये ओमो कौन है? डोंट नो। ओमो उसका जेट है सामने वाला। वो रिक्वेस्ट भेजी है। चलो नहीं आ रहे वो। अरे पिंक हो गया हुआ 73 आ रहा है। तो उल्टा सही है ना? ज्यादा नहीं आ रही। मेरे मोबाइल से इतना ही आता है। उल्टा ये सही चल रहा है अभी। लॉल। वाईफाई का सोचा है, बट वाईफाई आराम वाला यहाँ आते नहीं है, वो केबल वाला नहीं आ रहा। अरे बहुत दिक्कत हुई थी। वो 7,000 रुपए लगेंगे। अरे बहुत दिक्कत हुई थी मेरे गांव पे भी यही सिस्टम है। अब तो खैर आ गया। यहाँ पे तो, यहाँ से तो सिटी से कितना दूर है, मतलब कितना कहूँ? ज्यादा नहीं है, मतलब यहाँ से 500 1 किलोमीटर आगे लग रहा है वाईफाई। वो वायरिंग वाला ही। हम्म यहाँ पे नहीं लग रहा। पता है नौटंकी करते हैं लोग। वीजा क्या करे यार। और लेडी स्मोक ले चुका है, तुम कुछ और खेल लो। स्प्लिट। वाइपर अभी अभी अनलॉक की है। जेट। ब्रॉन्ज में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग गेम प्ले के हिसाब से खेले, डुअलिस्ट ले, कोई कंट्रोलर ले। नहीं डबल कंट्रोलर मतलब समझ रहे हो, तुम वीसीटी खेल रहे हो। मैं क्या लूं, सेज मेरी चली गई, सो मेरा चलता नहीं है। रेना रेना आती नहीं है। देख ये क्या, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ इनको? माइक सबकी बंद है। मेरे अरे में ये तो ठीक वेलो है। के ग्लिच है, बहुत दिन से चल रहा। क्या लूं मैं? रेना लूं, पर रेना आती नहीं मुझे। प्लीज बोल। ब्रीज आता नहीं है मुझे। अरे कुछ भी ले लो। ले लेता हूँ। लॉक करो। पर चलो सब एजेंट के नाम ले ले भाई। साइफर रेना ले ले ब्रीज। एक योरू ले लिया किसी ने तो। डुअलिस्ट हो गए 2। रेना हो गए, उनके बाद नियॉन हो गई। अस्ट्रा कंट्रोलर, डेडलॉक, कैपकॉम, बढ़िया उनकी टीम ठीक चल रही है। उनकी टीम ट्राई हार्ड क्यों लग रही है मुझे इस तरह देख के?
अगर उनका कम्युनिकेशन बढ़िया हुआ तो अस्ट्रा मस्त खेलेगी। पर अस्ट्रा से पता भी चल जाएगा वो कहाँ पे आ रहा है क्या है। नहीं, मैं खेलता हूँ इस तरह तो तभी देता हूँ जब लोग एंट्री करने लगते हैं। वो तो आप प्लेटिनम गोल्ड है ना तभी यो यो मामा, कवर देते हैं आपको, आपकी बॉडी को वो उनको पता है कि कवर देना चाहिए, यहाँ पे चले ही जाते हैं ब्रुकमैन, लोग। सोल किंग, चेन स्मोकर, खतरनाक नाम लेके आते हैं ये लोग। वैसे अभी कोई मिला नहीं खतरनाक नाम वाला। नहीं तो वो स्क्रीन हटाने पड़ जाएगी। अरे एक से एक हर कोई क्रिएटिव नए लोग नए हैं भाई वैलो में, खतरनाक नाम रखते हैं। एक सुरेश रैना होता है ना क्रिकेटर है ना। सुरेश रैना, ये क्या है सुरेश रैना? तो अरे क्रिकेटर है ना, मतलब मेरे को था पता ही पहले। हाँ। तो उसका इन लोगों ने कर लिया सुरेश रैना। यहाँ एजेंट है ना ओ रैना। रेना, हाँ हाँ। बोले हुआ बेंच। यहाँ इंस्टाग्राम ओपन करूँ हर कोई नए नए पोस्ट कर रहा है, और मैं इंसान हूँ जिसने इंस्टा से सारे पोस्ट हटा दिए क्योंकि अपनी शक्ल आजकल गंदी लगने लगी है। क्यों हटा दिया वैसे भी आ, वो पता नहीं है, आजकल मूड स्विंग वगैरह क्या ही चल रहा है। हैं? ज्यादा दोस्त छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं तो कुछ और ही जितने दोस्त बोलने बनते वाला नहीं, था नहीं नहीं चल रहा मेरे पे, ऐसे ही चल रहा है। तो हाँ। ऑनलाइन दोस्त बनते हैं, दोस्तों से हम्म। बात होती है क्या क्या दोस्त बने हैं वगैरह, क्या जिनसे मतलब ये कह सको, अपनी दिक्कतें कह सको, उनकी दिक्कतें सुन सको। फिर एक दिन अचानक वो चले जाता है। बनाते का है वो ऐसे दोस्त मैं है ही नहीं दोस्त, ट्राई करता हूँ बनाने की। देखो इसका क्यू क्या करता है, इसका क्यू करेगा फ्लैश, और इसका सी करेगा वो एक्चुअली जो जिसको ट्राई करके तुम बनाओगे ना दोस्त, को ज्यादा दिन चलते नहीं है। दोस्त ऐसे ही बन जाते हैं खेलते खेलते जैसे या फिर विपुल को कुछ। देख लो ना, विपुल मेरे दूर का भाई होता है, हम्म। और उससे बॉन्डिंग बढ़िया बन गई। फ्लैश। हाँ फ्लैश, यहाँ पे होता है मुझे। सेज ने वॉल नहीं किया मिड। हाँ सब यही Night night. Spike down B. अबे मुझे ये One enemy remaining. क्या था ये विजय? अबे हाँ 4 मैंने मारे, साला एक किल चुरा लिया, मतलब एस चुरा लिया। We won because we तो were अस्त्रा focused. अस्त्रा किसने मारी? Keep that. गन दे दो मुझे शरीफ। शरीफ क्यों चाहिए? तो आप क्या कुछ और नहीं चला रहे? मैं शरीफ चला रहा हूँ ना। चलो मैं रिस्पेक्टर चलाएगा। सारा किल चोर कौन था? योरू था ना। मेरे अस्त्रा किसने मारी, किसने मारी पता नहीं। मैंने 4 मारे उसमें से इस तरह भी होगी। Here. क्या नहीं है ये पे। Lock in sight. यार ये लोग आरएनजी कर देते हैं, फिर मैं भी नहीं मार पाऊंगा। अबे ब्रीच। Spike down A. मैंने फ्लैश किया आपको। हाँ मैं बढ़िया खेल रहा हूँ, पता नहीं कैसे। भाई सब फ्लैश मुझे ही कर रहे हैं। Healing you. One enemy remaining. Spike spotted. A. Right there. वहाँ पे है, वहाँ पे है। 30 seconds left. There you are.
There you are, little shit. अब नहीं बोलती। Ugh, Deadlock's अभी बोला wires इसने, are अभी बोला। अच्छा obnoxious. बोल। Shoot them for me, yeah? There you are, little shit. ब्रीच मस्त है। ब्रिज की फ्लैश अच्छी। नहीं इसका ये चार्ज है ना, मुझे पहले लगता था ये इतना सा छोटा सा क्यों है, फिर अब स्टन। इसको पावर लगा के करूँ ना स्टन, तो ये बहुत लंबा जाता है। लॉल। हाँ तो होल्ड करके ही मारना होता है भाई ब्रिज का स्टन। मैं यूं ही मार देता हूँ बस। अस्त्रा यहीं आ रहा है। Good work. चेन स्मोकर मर गया। क्या नहीं है, मिड देखो। वैसे जीतना नहीं है वैसे अपन को, हाँ याद आया। तो मैं तो सेरिफ ओनली कर रहा हूँ। ए जाएंगे। पहुंच गए, वो यही जा रहा है। इसने वो काम आ रही। Many and वो सेज को। good work. Spike planted. मैं अपने कर्सर यूज करता हूँ नए वाले, आई ऑफ यागामोटो। अभी मेरा जो कर्सर है ना, इसका नाम है आई ऑफ यागामोटो। अच्छा। Blocking sight. अबे हाफ कर दिया वैसे। Last player standing. एक ऊपर है। मरेंगे ये सारे। Prepare yourselves. We fight once again. मेरा कर्सर है ना, आई ऑफ चाओ। आपने स्लैश किया तो वो नाम आएगा क्या? क्या? अगर मेरा कर्सर है उसको अगर स्लैश करके सीसी करते हो, कॉपी करते हो, तो मैंने जो नाम रखा है वो आएगा? नहीं, तुम्हें रखना पड़ेगा। मैंने रखा है आई ऑफ यागामोटो, वो डॉक्टर स्ट्रेंज का। नाइस शॉट। इनको एनएस लिख दो। Cover going out. My territory, my rules. Spike planted. Last player standing. Cutting through. हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। देखा नया अपडेट आया जेंशिन में। Let them try to get through me. Good work. अपडेट किया ही नहीं, कर लेना। 600 प्रीमोस फ्री में मिल जाएंगे मेंटेनेंस के। Oh yeah! Monster on the loose! वाह भाई। Shadows traveling. Last player standing.
standing. हाँ ठीक है, ठीक हुआ। Once more into battle. I'm not tired. Are you? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. आ रही है ना। अभी आ रही थी, मैंने जो जो बोला हल्की सी आई, बहुत हल्की। वो मेरा ऑल्ट क्या FN4 कर दिया था, मतलब माइक बंद कर दिया, फिर भी आवाज कैसे आई? नहीं, माइक बंद नहीं किया होगा। मैंने बंद किया था, अब वो पुश टू टॉक करना पड़ेगा जब। कौन से बैनर पे स्पिन करना चाहिए? अभी दोनों बैनर गंदे हैं, बट कर भी रहे हो तो इटो पे करना। मैं स्टन करूं आगे? नहीं, कोई नहीं आ रहा। मेरे बहुत लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं तो बोलूँगा सेव कर लो, क्योंकि दो ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना जो कि दोनों अच्छे हैं नेक्स्ट बैनर में। हाँ मैंने लगवा दिया। Headshot. मैं ये करके आता हूँ। कनेक्ट कर दिया मैंने। Shadows traveling. One enemy remaining. Spike down A. मेरे तो लैग पे हो रहा है। मैंने अभी कनेक्ट किया था। 30 seconds left. क्या कैरेक्टर्स अपग्रेड? खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले। Last player standing. अरे एक बार डॉक्टर से दिखा लो। कैरेक्टर्स अपग्रेड हो नहीं रहे और AR इंक्रीज होता जा रहा है। वाह भाई। हो जाएंगे वो तो, तुरंत हो जाएंगे। Spike planted. और सारे कैरेक्टर्स एक साथ अपग्रेड वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ वो करो ना जिसकी गन बेस्ट लगे। अरे उसकी भाई बढ़िया शॉट। जेंशिन की बातें चल रही है। जेंशिन में मैंने तो छोड़ दिया। जेंशिन में वाइपर किधर से आएगी? मुझे लगा इसकी बात कर रहे हो। नहीं, यार 40 के लिए जेंशिन में वो टाइम चाहिए। 1000 XP चाहिए बस। हाँ तो बहुत दिमाग चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। वाह भाई। होता तो हम यहाँ थोड़ी होते। क्या मतलब? मैं तो यही कर रहा हूँ। Decoy. साला ये मुझे ब्लाइंड देगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। सी वो देता है आफ्टर शॉक। स्टन और सी दोनों एक साथ यूज करना, तभी काम आएगा। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले स्टन, उसके बाद फिर सी। यूरो इन्फो दे दो। यूरो इन्फो आएगा, इन्फो नहीं देगा वो। नो मैं चार्ज लेके बैठा। हाँ देख रहा है कितना नो वन है। यूरो बोल रहा नो वन, तुरंत मर गया। You sneaky. Little BC. Enemy spotted B. Enemy spotted. Spike planted. One enemy remaining. My ult's ready. कहाँ पे? अबे पीक लेना अच्छे से। खैर हक भी रहूँगा। लॉल। This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. मैं ये अल्ट करके वो क्या अल्ट करके क्या वो ई करके मैं सी कर देता हूँ या बी पे। हाँ अल्ट मत करना, अल्ट रीटेक के लिए करना। लियो का कैज़म वाला क्वेस्ट बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। कैज़म वाला हाँ, अंडरग्राउंड वाले सारे इरिटेटिंग हैं।
इनको नोमिया का कभी कभी लगता है। यहाँ पे इन्फो दे दे कोई। आर्कन क्वेस्ट तो सही है उसका। कैजम का आर्कन क्वेस्ट सबसे अच्छा है, मतलब जाओ वाला। क्यों डाला स्लो? और कौन नजर आ रहा है इसको बंदा? अपने वाले ने डाला क्या? जेट थी वो, जेट जेट डैश किया उसने। वो ग्रीन। Where did it? हाँ। ऊपर हेवन देखो। हम लोग को हारना था, भूल गएगा। पर अपने टीममेट बढ़िया खेल रहे हैं ना। हाँ। जिस टाइम हम दोनों जिंदा रहे ना तब हम गंदे खेलेंगे। नहीं, तब तो दिखाने के लिए खेलना पड़ेगा। अभी गंदे खेल के मर जाओ। हाँ अभी मर जाते हैं। आर्कन क्वेस्ट पेंडिंग रखा हूँ। कैजम में एक क्वेस्ट कंप्लीट करने पे लग्जरियस चेस्ट और 5 आर्टिफैक्ट्स मिला। बढ़िया यार। Spike planted. बी प्लांट हुआ क्या? मैं इतना गंदा एम लगाया फिर भी नियॉन मर गया। मैंने हवा में चलाई है गोलियां और एक गोली उसके सर पे लग गई। मत मार, उसने रिवाइव कर दिया ना। यार एक ही बंदा है ना। मैं करेगा नहीं करने दूंगा मैं। धीरे धीरे बैठ रहा है, सेंसी पे भी एम हो जाएगा। आपने क्या किया? मेरी सेंसिटिविटी अभी 3-1 ही है मेरी। 3-1 और 800 सेम सेंसी पे खेल लो फिर तो। और मेरे स्मूथ चल रहा है। मैंने मतलब हो गया इसके साथ। वो क्या कहते हैं उसको? कैरी गैको डेडलो बनना। कैरी नहीं, केयर। मैं आगे के 2 वर्ड ही पढ़ता हूँ, बाकी वाला मैं वो खुद कर देता हूँ। क्या कहते हैं उसको? मैं भी करता था, अभी भी करता हूँ कभी कभी। तो कोई है ही नहीं। Spike down A. जीतना नहीं है। ओमन रुक जा। ओमन मरने दो। आयरो इलेक्ट्रो बॉस मारने में हेल्प कर दो। मैं शाम को आता हूँ ना, तो फिर करते हैं सब, मतलब इसके बाद। अबे ऑलरेडी ऊपर है कोई। ऊपर है एक, देख। न्यूरो ने हगा है। अरे मर जाओ उससे। बढ़िया लगा क्या? मैं हारा जानबूझ के किया। नो डिफेंस कवर। You clean up whatever's करता भाई। left. नई चीज में मैं नया स्लैब बना देता क्या? एनवीएमएनटी। मैं आज का शॉर्ट फॉर्म समझने लगा हूँ। जंजी बन रहे हो धीरे धीरे हैं। जंजी बन रहा हूँ मुझे होने के बावजूद भी। मुझे नहीं पसंद ये वाली जनरेशन। कल मैं एक वो गया था स्क्वाड में, जो दिमाग खराब हुआ। हाँ बहुत चूत दिए थे भाई। मतलब बात बात पे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मुझे दे दिया किसी ने, फिर मैंने इतने अच्छे से पेला ना। गालियां देना उनको डोप लगता है टाइप। हाँ मतलब थोड़ी बहुत ठीक है, चलता है, बट ये क्या है बे? गाली के बिना बात ही नहीं कर। हाँ वही। बस यूं ही दे रहे हैं। फिर मैंने उसका मैच जीतने नहीं दिया उनको।
हाँ बोला साला 60 मुझे है, घंटा सही है। मेन रैंक के नहीं फर्क पड़ता, ये स्मर्फ में क्या ही फर्क पड़ेगा। और बच्चे बहुत आते हैं। हाँ अब वही। बच्चे और कन्या में पता नहीं चलता कभी कभी मुझे। लॉल। और बच्चे दोनों की आवाज़ ज़्यादातर एक जैसी लगती है। आप मतलब मार Spike down A. अरे मैं कहाँ मार रहा हूँ, ये मर जा रहे हैं, देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं मेरे सामने। 30 seconds left. There you are, little shit. मेरी रिवर पड़ी रहेगी। We doing this or what? मारो मत प्लीज। Can someone get हाइड्रो इलेक्ट्रो डैमेज में कैरेक्टर्स को डैमेज लग जाता है, पायरो इलेक्ट्रो में भी अपना स्किल से अपने को डैमेज लग जाता है। हाँ यार ये कभी कभी ओवरलोड से मैं मर गया हूँ उठाओ के लेके, बट कभी कभी होता है, ये सारे कैरेक्टर्स के साथ नहीं होता। देखो अपने को इसके बाद एक और मैच हारना है, फिर जीतेंगे चलेगा। इसके बाद एक और हारना है, पहले ये तो हार जाए। ये हारेंगे, ये तो मैं पक्का कहता हूँ, मैं खुद अपने इनको ब्लाइंड कर दूंगा। अबे चढ़ जा भाई। भाई कितना गंदा एम के हिसाब से मारा है मैंने। ये मर जा रहे हैं फालतू में। ये देखो ये मर जा रहे हैं। वही बोल रहा हूँ। खुद से मर जा रहे हैं। जाओ एस लो। हील करता है एस ऊपर है यार। हील कर दिया उसने। मिड वॉल ब्रेक किया इन लोगों ने। स्पाइक तो वही है, मैं भी जा रहा हूँ मानने। My territory! I have them now! Last player standing. 30 seconds लाइन left. आती है ना, डिस्टेंस अंटिल डेथ। Portal closed. Spike planted. बीटी भाई बीटी मतलब एंटी। बेटी। Last round in the half. No point saving. Spend it all। ले लेता है, मजा आएगा। I need a drop. मुझे दे दो, ड्रॉप दे दो। आप ऑपरेटर चलाओ। ऑपरेटर चलाओ, ऑपरेटर। नहीं हारना है, बोल दे। ऑपरेटर से जिता दूंगा मैं, बता। ऑपरेटर से और अच्छे किल्स होंगे। वो चला, वो क्या कहते हैं, वो 2 गोली वाली है ना, आउटलॉ। Decoy. अल्ट यूज ही नहीं किया मैंने अभी तक। कर लो जीतना नहीं है। पता नहीं, मैं ऐसे ही चलाते हुए जा रहा हूँ। मैं स्टन कर दूंगा, आप गए तो। अब नहीं कर पाओगे। Good work. Good work। आपने बोला, उसने बोला? मैंने बोल। अबे ये तो मैं इंटेंशनली भी नहीं कर रहा था। ये सही किया, उसको ओडिन का आइडिया दे दिया। Spike planted. Cover going out. ऐसरा तब से यही वेट कर रही है, वाह यार इतना पेशेंस। देख लेना अभी भी हो सकती हो। नहीं है वरना मार दी होती। जल्दी जाओ, शिफ्ट हुआ क्या कर रहे हो, घर ही आएंगे ये लोग। Enemy remaining. अगर डिफ्यूज नहीं हुआ ना, सब तुम ही को घर ही आएंगे। Switching sides. ये कुछ बोला नहीं वैसे।
Good work. Keep up. No. Shadows traveling. Shadows traveling. Cutting through. Our spike carrier is killed. Spike down A. मैं स्टन करने वाला हूँ। वाह भाई, मुझे कौन मार गया? मुझे स्लाइड कर दिया उसने। पता है इस लॉबी में यही होता, पीछे है तुम्हारे जो है वो। Last player standing. मैं तो आगे हारना है। हाँ हाँ, मकसद नहीं बोलने का। वो तो हार ही जाएंगे। टीममेट्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं। अब्दुल्ला भाई, मकसद नहीं बोलने का। सेज गोल्ड है? मेरी ही शरीफ है, आपकी शरीफ है। और हो भी सकती है गोल्ड, कौन सी बड़ी रैंक है। 30 seconds left. भाई काट सकती थी वो, पता है। Even with numbers, anything can still happen. Remember that. हम क्या ले, हम सेव करेंगे। ये वाली शरीफ को मारने है ना, एक बार उनके सामने निकाली थी। मेरी वाली शरीफ है ना, इसके तो किसके सामने? वसिया भाई इन्हों के सामने। तो वो राजस्थानी ये देखो ना, लगती भी वैसी है ना। लॉल, लाह पिघला के बनाई है ये, ऐसा कुछ। क्या क्या बोल रहे थे? बाल विवाह वगैरह क्या मारा है उसने? ओ भाई, कोलैट मार गया वो तो। कोलैट? Last player standing. गोल्ड है भाई, गोल्ड। गोल्ड भाई, गोल्ड। I survived a blizzard here. इस बात की चिंता। अरे इसके बाद चलते हैं, कस्टम खेलते हैं एक। रिलेटिव्स में बना लिया घर और मिल जाती है। रिलेटिव्स में बनाया 2.5 करोड़ का घर। Good work. तुम कितना 4 करोड़ का बनाने वाले हो? हाँ, आपके पास Yes. फैक्ट्रियों का काम चल रहा ही नहीं। मैं खुद ये वेब डेवलपमेंट में लगा पड़ा। डैमेज क्या सामने वाला? Reloading. Blocking sight. Scanning sight. और भाई क्या कर Down रहा? B. नाच रहे भाई, नंगे हो गए। 3. महाकाल भाई नहीं जीतना है। मकसद नहीं बोलने का। Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. 4. My ult's ready. नहीं जीतना है ना? नहीं जीतना है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही चला दूंगा, बता रहा हूँ। एंटी इसके बाद भी ये मर जाता ना तो वो भी एंटी लिख रहे हैं, देख लो। आदमी अगर 2 किल कर ले और तीसरे में हक देना तो What will एंटी it be आता है। this time? Have any patterns emerged? 4 किल थे, एस था मेरा। वाह, हमने आपका एज चुरा लिया। पर आप तो रोज एज करते हो। एस लॉबी में एस का क्या ही मतलब है? अपनी लॉबी में करता हूँ तो खुश बहुत होता हूँ। फेक भी करना है।
Nope. चलो जाके मर जाते हैं। जीतना नहीं है मकसद नहीं है मेरा मकसद भाई। 104 यार। हाँ तो मारना। Last player standing. बढ़िया 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 Spike down A. बढ़िया बढ़िया क्या जीतने तो ऐसे भी नहीं वाले। कहाँ पे होगा? तुम इस पर फुल ट्राई करो जीतने की। मैं कुछ बोलने ही वाला था बट छोड़ो। I got your backs. Just, you know, from the front. फिर भी हार जाते हैं। लेट्स फेक। अबे ये कौन बकरी पेला नीचे बैठा 5 के लिए पे। लेट्स फेक है वही बोल रहा हूँ मैं। मुझसे नीचे होता है ना लोग फिर तो मुझे लगता है कि लोगों को ही खेलना नहीं आता। योरू है देख रहे हो। मैं अंदर अल्ट कर रहा हूँ क्या वो Oops. Healing you. Thanks. The hunt begins. जाओ 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 बढ़िया। Barrier created. थ्रो करके कोई बंदा 21 किल पे कैसे हो सकता है? सामने वाले बहुत गंदे हैं। इन दोनों को देखो ओपन और सेज को देखा नहीं दोनों लाइन में मरे हैं दोनों लाइन में मरे ये सामने आके 30 seconds left. खतरनाक अल्ट भाई योरू। योरू प्रसाद नहीं। One enemy remaining. My territory, my rules. अबे लॉल उसका तो कट गया डेडलॉक का। खैर प्लांट तो ये भी नहीं कर सकता। नहीं कटा बे खींच सकती है अभी भी। अच्छा हट गया। Stand tall. We are Valorant. No, we are fighters. अरे बिल्कुल भाई सरेंडर मारो। मैं तो रेडी हूँ भाई रेडी। Let's go. Reloading. Careful. Shadows. Enemy spotted. A. One down. हाँ ये डाला ना सही चीज। एक और ब्लाइंड डाल के घुस जाओ। ऐसे खेलो भाई मजा। Worthless. My ult's ready. Oh yeah! Monster on the loose! यहीं पे लूज कर रहा होगा। यार डिफ्यूज नहीं होगा। One enemy remaining.
Get me in the line of fire. No. Same. Hey. Good work. I'll cut through. Nope. मेरे पास स्पाइक किसने दिया? Last player standing. मोमेंट बेस्ट टीपी भाई। अरे वो फेक टीपी होता है। ये आवाज कैसे आ गई? Match इतनी देर आवाज आती नहीं थी, अब वापस आ गई। फेक टीपी होता है भाई वो। वो फेक उसे बड़ी लॉबीज में करते हैं लोग वो, उसको तुम बेकार टीपी मत समझो। पर वो जिनको इन्फो से फर्क पड़े ना, यहाँ पे तो हाँ वही बात है। यहाँ तो बस आंखों में जो देखे वहीं पे आदमी है, और जहाँ पे कानों पे भरोसा नहीं है यहाँ पे लोग। इसीलिए तो योरू का क्लोन पहले कुछ नहीं था। मैं अल्ट कर रहा हूँ। मर गए कैसे? Spike down mid. रेना से मर गया। जी लिख दो। Last player standing. Flawless. Defenders win. इसके दो मतलब हो सकता है, जीजी गाइड और जीजी गांडूर। बहुत कुछ के बहुत मतलब होते हैं भाई। चलो वेस्टर्न खेलते हैं। कौन सी लॉबी मिल रही है अपने को, जरा देखूं मैं। सिल्वर 1 हूं ना मैं। ब्रॉन्ज आयरन की लॉबी मिल रही है भाई। एक कस्टम लगाओ फिर बंद ही करते हैं। अरे कॉम्पी नहीं खेलना था। हेलो। एक मिनट। फैंटम की इस बार वाली स्किन बढ़िया लग रही है मुझे, ये बैटल पास में। सही है। और ये नहीं खेलेंगे, वो खेलना है। प्लाजा नहीं। मैप दूसरा था। प्लाजा नहीं। प्लाजा में क्या होता है? चलो फिर जल्दी जल्दी कुछ लॉक करके एग्जिट करते हैं। हाँ। मुझे ईसो खेलना होगा, मैं ईसो ट्राई करूंगा, उसके अल्ट में ट्राई करना है मुझे। अल्ट में करोगे क्या उसका? खेलना है ना वो अल्ट उसका। मैं कभी कभी अल्ट करता हूँ, बहुत बुरा मारता हूँ या फिर बहुत बढ़िया मारता हूँ। उसका अल्ट एडवांटेज देता तो है। मेरे पास 2 बॉल होती है पर निकलो। लीव करो। सामने वाले के पास एक गंदा सा वॉल होता है। एक मैप कौन कसा? उसके सामने से निकल जाता कस्बा। है। कस्बा नहीं, ये तो वॉर बेकार। फिर कौन सा है? वो लगा वो डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ ड्रिफ्ट डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो।
डिस्ट्रिक्ट में क्या है? लॉन्ग है ना, यहाँ पे एक लंबी गली है। क्या फिर मैं क्या लूँ? जो लो, मैं तो इसको ट्राई करूंगा। तो जेट ले लेता हूँ। अल्ट्र से खेल रहा है? हम्म, क्या लूं? मैंने नया नया ब्रीच खोला है। यही खेलते हैं ना, जेट जेट खेलते हैं। जेट जेट मैंने इसको लॉक कर लिया, अगला मैच इससे। ठीक है। मेरे 500 FPS आ रहा है। ये इस टाइम आता है लोडिंग के टाइम। अब 200 पे आ गया। My ult's ready. नहीं, ये टाइम तो खत्म करो, एंड फेस करो। एंड फेस कर सकते हो तो उससे हो जाता है। अच्छा है क्या? आ जाओ, लॉन्ग क्या हो? लॉन्ग से ही मिलेगा। इससे अच्छा तो वो ड्रिफ्ट था ना मैप। हाँ, ड्रिफ्ट इससे बढ़िया है। कहाँ पे हो? गन से खेलना है अभी तो। अच्छा, मेरे गन एंड से में तो वो खेलना है। आएगी, क्या कहते हैं उसको? हाँ तो वो चाहिए खींचो। मुझे। ड्रिफ्ट चाहिए। ड्रिफ्ट क्या, वो वैंडल चाहिए। My ult's ready. हाँ, लॉन्ग में आओ, लॉन्ग में खेलेंगे। लॉन्ग ही तो है। अपनी गली। ऐसी है कार है। अरे मसियो, इसमें मस्त नई सन से सेट की है, मतलब डीपीआई, तो बस वही एम ठीक कर रहा है। It's you and me. इधर It's यूएन। you and me. It's you and me. वो शरीफ पे आओ, इसको करो चीट पे जाके। New stage in 10. हाँ, शरीफ। Stage 2. It's you and me. I can't use that. अबे लगी नहीं रही। लॉन्ग पे आओ। लॉन्ग पे हूँ। लॉन्ग ये वाली गली है ना एक। अच्छा ये। हाँ, मैं उसको लॉन्ग कहता हूँ। एक मिनट। मेरा वो जाने वाली है शील्ड, अब जल्दी आओ। काय की शील्ड? अच्छा शील्ड चली गई। फिर आ गई। अब यही पे खेलते हैं। मैं अपना कर्सर से क्या हुआ ये नेट है। यार ये तो सही है यार, ऐसो का शील्ड। यार कॉल कौन कर रहा है बार बार? बाहर ये बार डैश क्या कर रहे हो? ये आइसो की शील्ड एक डैमेज पकड़ती है, मतलब एक बार गोली लगती है ना, वो वाला एक कर देता है ये, मतलब वो किसकी भी गोली हो। साला उतनी दूर पिक्सल्स नहीं जा रहे क्या? चलो मैं अभी मार्शल उठाता हूँ। अभी जाओ। मर गया मैं। आया। शरीफ से मारा, मार्शल कहाँ गई? मार्शल है ना। It's you and me. आप भी कभी हेल्प कर सकते हैं। इतना गंदा लग रहा है बे। गेम हाँ वो दिख रहा है।
मतलब इतनी गोलियां वेस्ट हो रही है। प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। मार्शल आपके वहाँ आई हो तो उठा लो। ना अभी नहीं है। सीड ले लेनी चाहिए थी। कर्सर चेंज करने की वजह से हुआ है। Man. नाइस वन। तो मैं वो करता हूँ मैं क्या करने वाला था यार भूल गया। My ult's ready. मैं क्या करने वाला था मैं भूल गया। नाइस शॉट है। थैंक यू। सेंसिटिविटी से बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है ना। मेरे 800 DPI और सेंसिटिविटी 3.5। हाँ वही तो। अब आया हूँ 3.1। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मेरा अभी कर्सर जैसा रखा हुआ है ना वो देखोगे ना वो तो मतलब क्या है। मतलब कर्सर नहीं कह सकते उसको। एक बड़ा सा प्लस है जिसके बीच में एक छोटे से 3 डॉट है। चलो ये फेस एंड करता है वो लेके आ जाता है क्या कहता है वैंडल करो। वैंडल आ गई क्या? हाँ आ गई। एम तो यहाँ सही लग रहा है बे तेरा। फिर मैच में इतना काम का ही नहीं रखते एम को। यहाँ पे बहुत काम है ना मतलब यू ना किसी की टेंशन वगैरह कुछ नहीं है जीतना यार। वही बोल रहा हूँ तो मैच में क्यों रखते हो? और यहाँ पे यूं भी है कि एनिमी यहीं आने वाला है उसका बॉडी इमेजिन करके वहाँ एम रखो। ये तो है। पहले से कितना एम इम्प्रूव हुआ है? बहुत एम तो अच्छा हो गया। बस गेम सेंस के लिए तो खेलना ही पड़ेगा। उसका कुछ और नहीं कर सकते। एक कर सकते हो वीसीटी देख सकते हो चाहो तो। वैसे मैंने आज तक नहीं देखी मतलब एक बार देखी। वैलोरेंट चैंपियंस वो टूर्नामेंट होता है ना। ओ जिससे वो ट्राई करूंगा पर इतना टाइम नहीं बोर हो जाता हूँ कुल मिला के यार। अगर वैंडल होती तो मर जाते। हेड लगाता 26 कौन
My ult's ready. मेरे सर के ऊपर से गया है just It's you and me. It's you and me. अबे लैग हुआ था अभी. It's you and me. It's you and me. It's you and me. It's you and me. गेम बहुत मिस कर रहा है पता नहीं. मैं तो बस सीढ़ी तोड़ पा रहा हूँ. It's you and me. बढ़िया मुझे फुल हेल्थ मिल गई.
It's you and me. Nice shot. कुछ बोल नहीं रहे। वेलो को कुछ ग्लिच हुआ क्या? साला अटैक किया। नाइस शॉट रे। Good work. What's this? My ult's Okay. ready. What's this? It's you and me. It's you and me. It's you and me. It's you. अब मैं अकेला क्या करूं भाई? My ult's ready. ये क्या था भाई?
अल्ट में जाने से पहले कोई कैसे मर सकता है? My ult's ready. What's this? My ult's ready. What's this? कहाँ आ गया मैं? My ult's ready. What's this? What's this? My ult's ready. What's this? What's this? My ult's ready. What's this? What's this? बस ऐसे ही मैच में खेलता हूँ। What's this? My ult's ready. What's this? What's this? What's this? My ult's ready. F ये क्या था? मजा आया वैसे आज। हाँ 80 तक पहुंचा हूँ मैं। वो 40 क्या जेट जेट खेलना? अरे ये ग्लिच बहुत करता है रे वेलो। हाँ चलो गाइस बंद करते हैं स्ट्रीम को, मिलते हैं कल आपको आपसे।